Actually, I have been successful in publishing good quality of research papers there in the Lucknow University also. And before, uh, after my retirement, you say that this thing, 1 year before the retirement, I have taken 3 students. They were excellent students, and I changed my area of research and tried to apply my previous knowledge on the nanomaterials. And we thought that we should prepare some nanomaterials, characterize them, and also perform the nanokinetics. So that very few people were doing this kind of this thing. And you will be surprised to know that I have published around 25 papers, including the Royal Society and the American Chemical Society and Inorganic Chemistry Communications, Polyhedron, etc. Around 25 papers in 4 years I have published. And even today, I am publishing papers, even after retirement. After retirement, I have been working in the chemistry department as a professor of eminence for 2 years. And then later on, I moved to the Lucknow University second campus. There also, presently, I am working as a professor of eminence in the applied science department and teaching the BTech and the M.Tech students at the second campus of Lucknow University. So still I am teaching. Teaching is my hobby. So today I am going to present this particular detailed kinetic and mechanistic study on the preparation of the silver nanoparticle adopting the chemical detection method by simple UV visible spectrophotometric method and the characterization, as you know that people are using the SAM, TEM, BET and IR and so many techniques are used for characterization. That too I have performed and I have also performed the biological studies in association with the King George Medical University and the part of this work has been published recently in the American Chemical Society. So before going into details of this today's talk, nano, but it was not so much famous. And now people have started working on the nanomaterials, nanoparticles, and so on, nanotubes, nanowires, and so on. So now the nanomedicine also is coming into picture because if somebody is suffering from cancer, and from any incurable disease. And if you prepare a kind of medicine and you give them in the form of a nanoparticle in size of at the nano level, then what is the beauty of this nano medicine is that if that medicine is given to a patient, it's being so small, it targets, hits the target of the infected cancer cell and so on. It doesn't damage the surrounding. Like in the chemotherapy, that is cisplatin therapy and in any other therapy, they are curing the cancer, but they are damaging the surrounding cells also. The beauty of the nanomedicine is just target. They are so small and they will target and cure the cancer in this thing. Even in the SGPGI, Lucknow, the scientists have started working on the area of nanomedicine. So please. Uh, So before going to the details of my work, I would like to tell you an overview of the nanotechnology. This is the introduction, classification, and this thing. And then next one, next please. Time factor is also 30 minutes. Fundamentals. Next. Now you see, human dreams in imagination give rise to new science. That is the nanoscience, nanomaterials. A good nanomaterial is that material whose size lies between 1 to 100 nanometer range. If somebody prepares a nanomaterial whose particle size
That is determined by the dynamic light scattering method. If it is more than 100, it is not a good nanoparticle. 1000, 2000 nanometer, it is not a nanoparticle at all. So you should prepare a nanoparticle or a nanomaterial, maybe in the composite form or in the form of a nanoparticle. Its size should lie between 1 to 100 nanometer only. This is a very prerequisite for preparation of a good nanomaterial. So the emergent properties of this thing that they have a tremendous use in the electronics, medicine, and other fields. So I'm not going to this thing. See, this is the imaginative pioneers. These people have been the pioneers of the nanotechnology. 2000 years ago, sulfide nanocrystals used by Greeks and Romans to dye hair, as Professor Premraj was telling about the this thing, dye and their bad effects on this the human health. 1000 years ago, silver and gold nanoparticles of different sizes were produced in different colors in the stained glasses. 1959, Richard Payan, he also even there's a plenty of room at the bottom by Richard Payan. He also prepared this thing nanoparticles. Nanotechnology was also introduced by Taguchi. This thing in the IBM computers, STM coding is done, by the dots, that is known as the quantum dot. Fullerenes. Fullerene is the Buckminster. It is a C60 carbon. It is a very good example of a nanomaterial. Like graphite. If you cut the graphite, graphite is found in abundance in different parts of the world. So, if you cut the graphite, like if you purchase an ice brick from the market, उसको आप काट दीजिए और लोगों को जो है आप आइसक्रीम खिलाइए तो each slice is actually a graphene, and graphene has got a very good property. It's also a nanomaterial. ग्रेफीन की क्या प्रॉपर्टी है, जैसे आपके बहराइच रीजन में या गोंडा के रीजन में तमाम सारे क्रोमियम्स और हेजार्डस मटेरियल पाए जाते हैं, नल से पानी निकालने पर भी वो क्रोमियम आपके निकलता है, तो अगर आप ग्रेफीन के सरफेस के ऊपर से उस क्रोमियम को गुजारेंगे, what is going, it works and is a very good adsorbent. Majority of arsenic, chromium, and hazardous material is going to be adsorbed, and if it is produced at a industrial level, अभी नहीं ऐसा कर पाए हैं लोग, तो आपको वही पानी जो नल से जहर के रूप में निकल रहा है, you will be able to have a very good quality of water, and that will be drinkable. So here the fullerenes and this thing, and the K-Eric and Lexer also introduced the nanotechnology. Next one, please. Next slide, please. Now you see the bulk material and the nanomaterial. What is the difference? You see, there is a difference. 100 नैनोमीटर से ज्यादा होगा तो वो बल्क कहा जाएगा, 100 नैनोमीटर से कम होगा उसको नैनो पार्टिकल कहा जाएगा. नैनो पार्टिकल की ड्यूटी ये होती है इसकी लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया और उसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है. सरफेस एरिया आप समझते हैं किसी भी चीज की, कोई भी चीज, इसकी सरफेस एरिया और इसका जो वॉल्यूम है उसका रेशियो बहुत ज्यादा होता है नैनो पार्टिकल में. दैट देन ओनली this thing, and these are the properties, low percentage of the molecule at the surface. इसमें क्या होता है, बल्क मटेरियल में क्या है, सरफेस के ऊपर इसका बहुत लो कंसंट्रेशन होती है, लेकिन हाई परसेंटेज ऑफ द मॉलिक्यूल एट द सरफेस. ये इसका ये डिफरेंस है. नैनो मटेरियल जो है, नैनो मटेरियल्स कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्वड इन मेनी एप्लीकेशंस, such type of property is not observed for the bulk material. So this is the next one, please. I just wanted to show before my actual work, so that it may be, some of the students may be fascinated to perform this kind of work in even at your PG lab. If you have a spectrophotometer, you can do it. And rest of the thing for characterization, you can go to Central Drug Research Institute and the King George Medical University, and also SEM. SEM is a very cheap technique which is available at the Institute of Paleobotany. स्टूडेंट्स के लिए सब्सिडाइज है, 100-200 रुपए में आपका वहां पर जो है सेम हो जाता है. टेम इज कॉस्टली, वन हैज टू गो टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड अदर प्लेसेस. ट्रेवलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. सो नेक्स्ट वन प्लीज.
Next. Now you see classification. How will you classify a nanomaterial? Nanomaterial can be one dimensional, zero dimensional, one dimensional, two dimensional, three dimensional. Now you see solid nanoparticle, nanorods, and the sheet layered structure. That is a two dimension. Three dimension में आप ये देखिए, three dimension में this is the structure of the graphite. और एक स्लाइस अगर आप इसकी कट कर लेंगे, that will be the graphene. So similarly, these are the quantum dots. These are the carbon nanotubes. जैसे मान लिया हम कोई नैनो मटेरियल बनाए, कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल बनाए, और उसको जैसे कागज लपेटते हैं, कागज को हमने लपेटा, लपेट के उसको सिलेंड्रिकल बना दिया। सिलेंड्रिकल बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है आपने कार्बन की नैनो ट्यूब बना दी, कार्बन की नैनो ट्यूब बना दी। उसकी ड्यूटी क्या है? ग्रेफाइट में क्या होता है? कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड होता है, उसकी जो लेंथ होती है, दैट इज 0.14 नैनोमीटर। यू सी 1 to 100 इज द बेस्ट नैनो मटेरियल। और एक ग्रेफाइट की लेयर से दूसरे ग्रेफाइट के लेयर के बीच की जो दूरी होती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.34 nanometer. So this the graphite and graphene both, they are the best example of the nanomaterial that is present in the nature. So कार्बन की नैनो ट्यूब्स है, कार्बन की नैनो ट्यूब आपने एक बार एक सिलेंडर बनाया, उसके ऊपर फिर लपेट दूसरा सिलेंडर बनाया, तीसरा, चौथा, पांचवा। सो यू कैन प्रिपेयर ए मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब। आप एक लेयर के बाद दूसरा लेयर, सिलेंडर पर सिलेंडर पर सिलेंडर पर आप बनाते गए। सो देयरफॉर यू विल बी एबल टू प्रिपेयर ए मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब। मल्टी वॉल कार्बन नैनो ट्यूब आजकल जमाना है उसका, बहुत सारे एरोप्लेन्स में, तमाम सारी जगहों पर नैनो मटेरियल्स का कार्बन बेस्ड, ये सब कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल्स हैं। ग्रेफाइट, ग्रेफीन एंड ऑल दिस थिंग। सो नैनो वायर्स का जमाना आ गया। लोग तार, नैनो वायर्स लोग बनाना शुरू कर दिए हैं। नैनो का मतलब पार्टिकल, 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 उसको जोड़ करके हमने तार बना दिया। सो वी कैन आल्सो प्रिपेयर ए नैनो वायर इन द लेबोरेटरी, दैट हैज गॉट अ ट्रेमेंडस एप्लीकेशन। अब आप देखिए इसमें क्या है, अब नैनो मटेरियल को हम मार्फोलॉजी के बेस पर भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमारी मार्फोलॉजी क्या है। हमारा नैनो पार्टिकल सिलेंड्रिकल है, या हमारा स्क्वायर के फॉर्म में है, या डार्ट के फॉर्म में है। तो मार्फोलॉजी के बेसिस, मार्फोलॉजी का मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, दैट आल्सो वन कैन क्लासिफाई। और इसमें जो है आप देखिए आइसोमेरिक, इनहोमोजीनियस, डिस्पर्स, सस्पेंशन, एग्लोमेरेट्स, केमिकल कंपोजिशन, ये सारे जो है इस तरीके से हम मार्फोलॉजी के बेसिस पर भी ये इनको हम नैनो मटेरियल्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड। और नेक्स्ट वन प्लीज, पिलर्स के रूप में भी बना सकते हैं। आप देखिए नेचुरल नैनो मटेरियल्स, दिस इज जनरेटेड बाय केमिकल एक्टिविटीज। नाउ यू सी, ये देखिए ये जो आंखें हैं इसकी, ये जो बेबी समथिंग लाइक लिजार्ड और सो, ये नैनो के साइज की आंखें इसकी दिखाई पड़ती हैं, चमकती हैं बिल्कुल। नैनो मटेरियल बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस वन। सिमिलरली incidental nanomaterials generated by direct or indirect human activities. आदमी जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई चीज करता, उससे भी नैनो मटेरियल बन जाते हैं, हम लोग को पता नहीं चलता है। बायो इंस्पायर्ड नैनो मटेरियल इज जनरेटेड एन इंजीनियर मटेरियल व्हेन मिमिक विद लिविंग मैटर्स आर नेचुरल नैनो मटेरियल। अब आप देखिए तमाम सारे प्लांट्स हमारे ऐसे हैं, जैसे आपने सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, आपने गोल्ड की क्लोराइड ले ली, या आपने पैलेडियम का कोई साल्ट ले लिया। दिस इज ऑल रेयर अर्थ। जनरली कैंसर थेरापी में ये सब साल्ट ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब आपने उसमें प्लांट का रूट को आपने पानी में आपने खौलाया कुछ देर तक, या उसके पौधे के पत्ते को आपने उसमें एक्सट्रैक्ट बनाया। अगर आप सिल्वर नाइट्रेट में गोल्ड के साल्ट में डाला तो आप देखेंगे उसमें कलर डेवलप होते हैं। अब वो कलर डेवलप होते हैं, इसका मतलब है कि हमारे सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में, या गोल्ड के सोल्यूशन में, या पैलेडियम के सोल्यूशन में कुछ हो रहा है। अब क्या हो रहा है? इट मीन्स द गोल्ड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू नैनो लेवल एंड सिल्वर इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू। हाउ टू कैरेक्टराइज इट? यू कैन डू इट बाय यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये सारे के सारे अगर कन्वर्जन हो रहे हैं
बाय प्लांट रूट, बाय प्लांट एक्सट्रैक्ट। तो आप देखेंगे एक प्लाज्मोनिक बैंड जनरेट होता है। प्लाज्मोनिक बैंड का मतलब यह हुआ कि जब हमारे नैनो मटेरियल के ऊपर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली जाती है तो वो पूरी की पूरी ये जो है इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उस रिफ्लेक्शन के ऊपर जो वेवलेंथ होती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मोनिक बैंड। और वो प्लाज्मोनिक बैंड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल कंसर्न। तो वो उससे हम यूवी से भी एक टेंटेटिव आइडिया निकाल सकते हैं। इंजीनियर इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पेसिफिक पर्पसेस और एप्लीकेशन। एग्जांपल्स ऑफ ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको देखिए यहाँ पर दिखाए गए हैं और ये आप हमसे ले सकते हैं, पूरा लेक्चर ले सकते हैं, पूरा आप पूरी कॉपी ले सकते हैं बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गिवन द मटेरियल ऑन द माय जीमेल, so you can get it xerox and read it. And even if you require more material, I have brought and I can send you the soft copy as well. आपको इसके बारे में अगर आपके कोर्स में है, नॉलेज आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप उसके भी हमसे ले सकते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। अब देखिए ये क्लासिफिकेशन जो है, ये कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल जो कि मैं पहले बता चुका हूं। अब आप देखिए ये फुलरीन्स, ये आपका ग्रेफाइट, ये कार्बन बेस्ड नैनो मटेरियल्स हैं। ये गोल्ड की नैनो पार्टिकल हैं। क्वांटम डॉट्स का आजकल बहुत फैशन है। क्वांटम डॉट्स इज ए वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड टर्म्स इन नैनो टेक्नोलॉजी। क्वांटम डॉट इज नथिंग बट अनदर नेम फॉर द नैनो पार्टिकल। देखिए यहाँ पर डॉट्स के रूप में ये आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर इनऑर्गेनिक नैनो मटेरियल्स का ये एग्जाम्पल है, क्योंकि ये मेटल है, ये कार्बन है, कार्बन बेस्ड है। ऑर्गेनिक नैनो मटेरियल्स, ये माइसिल के बारे में आप जानते होंगे। माइसिल इन द नैनो पार्टिकल इज यूज टू स्टेबलाइज द नैनो पार्टिकल। जैसे मान लिया मैं अगर स्टेबल नहीं हूं, मैं नैनो पार्टिकल हूं, मैं इधर उधर भाग रहा हूं, तो मेरे तरफ एक माइसिल, सोडियम डोडासिल सल्फेट। सोडियम डोडासिल सल्फेट क्या है? सोडियम डोडासिल, इट इज एन एनायनिक माइसिल। चाहे कटायनिक माइसिल डालिए, एनायनिक माइसिल डालिए या न्यूट्रल माइसिल जैसे टाइटन X100 है, तो आप अपने नैनो पार्टिकल को स्टेबलाइज कर सकते हैं विद इन सर्टेन पेरिफेरी। सो दिस इज लिपोसोम्स एंड फेरेटिन। नैनो कंपोजिट आप बना सकते हैं। आपने देखा होगा कॉपर है, जिंक है, इनके मिश्र धातु बनाए जाते हैं। मिश्र धातुएं जो बनाई जाती हैं वो अगर बल्क में हैं तो वो नैनो मटेरियल नहीं हुई, उनको आपको क्रैक डाउन करना होगा और उनकी लेवल को आपको 1 से 100 नैनोमीटर तक लाना होगा, तभी वो नैनो मटेरियल नैनो कंपोजिट बनेंगे। तो नैनो पार्टिकल कंपोजिट में 2 या 2 से 3 मेटल या और उससे ज्यादा मेटल हो सकते हैं। कंपोजिट कंटेन्स सेवरल दिस थिंग metals in a different ratio. So this way you can prepare. Now you see classification based on the porosity. अब pores, उसमें कितने pores हैं? Pores का मतलब यह है कि अगर कोई नैनो मटेरियल आप बनाएं, उसका हमारा जो है वो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर उसके अंदर पोर्स हैं, पोर्स का मतलब छोटे छोटे उसमें वैलेंसीज हैं। अब आप हमको हैजार्डस मटेरियल को हमको छानना है उसके थ्रू, तो क्या होगा हैजार्डस मटेरियल? हैजार्डस मटेरियल चाहे क्रोमियम हो, आर्सेनिक हो, और ये सब चीजें उसी जाके पोर्स में बैठ जाते हैं, उसी पोर्स में जाके वो बैठ जाते हैं और उससे जो 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 पानी हमारा होता है जो कि इम्प्योर था, अब वो पानी क्रोमियम बैठ गए जाके इन पोर्स में और पानी हमारा जो है मीठा पानी निकलता है। तो ऐसे आप गुजरात में चले जाइए, मैं आई वर्क देयर इन द सेंट्रल साल्ट एंड मैरीन केमिकल इंस्टीट्यूट विद प्रोफेसर M.L.K खान, एंड देयर यू सी देयर इन गुजरात यू हैव ए डिसैलिनेशन प्लांट। छोटे छोटे मोबाइल वैंस वहां देखे जाते हैं समुद्र को मीठा पानी बनाने के लिए। तो ये सब सारी टेक्नोलॉजीज उधर यूज हो रही हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल स्केल पर नहीं। एक गांव की प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 100 गांव की प्रॉब्लम आपको 100 वैन चाहिए, तब जाके पूरे गांव वालों को आप 100 गांव वालों को पानी आप पिला पाएंगे। तो अब समुद्र पर काम चल रहा है, लेकिन अभी उस लेवल पर काम नहीं हो रहा है कि पूरे समुद्र का पानी अगर मीठा बना दिया जाए तो ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम, भगवान कृष्ण ने श्राप दे दिया था सौराष्ट्र रीजन के लोगों को। सहता कि जो लोग ज्ञानी होंगे यहाँ पर वो पढ़े होंगे, मुझे तो बताया गया, मैं जाता ज्ञानी नहीं उस बारे में, कि मैं तुम लोगों को श्राप देता हूं कि तुम सौराष्ट्र वासियों को
मीठा पानी नसीब नहीं होगा। आप 1000 फीट नीचे चले जाइए, खारा पानी ही मिलेगा वहां पर, चाहे वो द्वारिका हो, अहमदाबाद हो, गुजरात हो, बड़ोदरा हो, कहीं भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं वहां रह चुका हूँ CSIR लेबोरेटरी में एज ए साइंटिस्ट। सी आई हैव वर्क फॉर सम टाइम। सो मैंने देखा कि बात बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ 500 फुट नीचे से पानी हमारा जो लैंडलॉर्ड था वो निकालता था, तो भी पानी खारा ही निकलता था। हम लोग बाजार से खरीद के लाते थे, तब पीते थे। सो दिस इज ए काइंड ऑफ कर्स बाय द लॉर्ड कृष्णा। उन्होंने अब किस वजह से उन्होंने श्राप दिया वो मैं जानता नहीं उसके बारे में। सो दीज आर द डिफरेंट दिस थिंग नो पोरोसिटी के बेसिस पर ये माइक्रोपोरस है, मेसोपोरस है, मैक्रोपोरस है। मैक्रो का मतलब बड़े उसमें पोर्स हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो है जो साइज है पोर्स की वो 2 नैनोमीटर है, यहाँ पर 2 से 50 नैनोमीटर है, और यहाँ से ग्रेटर देन 50 नैनोमीटर है। सो दिस इज द अपीयरेंस। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ पोरोसिटी ऑफ नैनो मटेरियल्स। इसका बताने का मेरा पर्पज सिर्फ ये है कि अगर आप पोरोसिटी के बेसिस पे नैनो मटेरियल को बनाएंगे तो इसका मतलब आप बेस्ट एडजॉर्बेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, क्योंकि ये एडजॉर्बेंट के रूप में काम करेगा और पानी को साफ करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर पोर्स को आपने फिक्सअप कर दिया तो फिर आप जो है सक्सेसफुल होंगे। मे नॉट बी इन दी एट द इंडस्ट्रियल लेवल, लेकिन काफी हद तक आप जो है, अब कोई काम करने वाला हो तो इंडस्ट्री लगा दे बहुत बड़े स्केल पर। ग्रेफीन की पूरी, जैसे आजकल देखें सोलर पैनल्स लग रहे हैं, क्यों नहीं इसी तरीके से जो है ग्रेफीन की चादरें बिछा करके पूरे गांव वालों का पानी साफ किया जा सकता। भले वो कॉस्टली हो, किया जा सकता है, लेकिन कोई आगे आएगा तभी कुछ हो सकता है। वो भी कभी किसी जमाने में आएगा ही। चलिए अब नेक्स्ट साइड, नेक्स्ट वन। और ये देखिए क्रिस्टलिटी के बेसिस पर भी हम नैनो पार्टिकल को हम जो है, अब ये देखिए ये मोनोक्रिस्टलाइन नैनो पार्टिकल, पॉलीक्रिस्टलाइन, एमॉर्फस। सो दीज आर आल्सो वन ऑफ द वेज ऑफ द क्लासिफाइंग। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए फ्री हैं, बहुत ही सब्सिडाइज हैं। आप लिख देंगे कि मैं बहुत गरीब हूं और पैसा देने में असमर्थ हूं, तो शायद वो माफ भी हो जाएगा यूनिवर्सिटियों में जो है। तो ये भी हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट वन। हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं बहुत जल्दी कंक्लूड कर रहा हूँ। आई एम जस्ट मैं कंक्लूड करूंगा। मैंने भैया मैं प्रेमराज साहब का स्टूडेंट रहा हूँ। उन्होंने मुझको पढ़ाया है। अगर वो 2 घंटा बोले हैं तो कम से कम मुझको तो एक चौथाई बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो मेरे गुरुजी रहे हैं। शुरू में मुझको पढ़ाया है उन्होंने थोड़े समय के लिए, लेकिन फिर भी हाँ, अब गुरु गुरु होता है तो भाई अब जो है हमको भी उतना नहीं तो कम से कम उनकी पूछ के बराबर तो कुछ मौका मिलना चाहिए। ऑन कर दीजिए, हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे अपना, because this is my own work, so I will finish it as quickly as possible. हाँ, मेरी नसीब
टीवी खराब है क्या लग रहा है? हाँ? अरे ठीक है, बिल्कुल, लेट इट टेक 30 सेकेंड, और मैं बिल्कुल बहुत जल्दी मैं ख़त्म कर दूंगा। और so, चलिए, अब ये सब चीजें देखिए, मेरा दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रीन सिंथेसिस। सो द नॉन पार्टिकल व्हिच आई हैव प्रिपेयर्ड इट थ्रू द ग्रीन सिंथेसिस। चलिए आप देख लीजिएगा इसको, इसमें तमाम सारे चीजें हैं जो इनसे हम जो है आप ये देखिए, यहाँ पर जो है प्लांट्स वगैरह से इससे हम बना सकते हैं। करेक्टराइजेशन हम लोग कैसे करते हैं? नैनो पार्टिकल आपने बना लिया यूवी से, एफटीआईआर से, पाउडर एक्सरे से, और इससे आपसे जो है सेट से, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी से, इस सब से हम करेक्टराइजेशन नैनो पार्टिकल की कर सकते हैं। डीएलएस से हम डायनेमिक लाइट स्कैटरिंग मेथड से पार्टिकल साइज डिटरमिन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये देखिए इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है, ये पहले मैं बता चुका हूं और इसमें कोई नई बात नहीं है। अब ये देखिए, क्लिनिकल स्टडीज सजेस्ट दैट द गावापेंटीन मैंने यूज किया है। गावापेंटीन इज ए न्यूरोलेप्टिक ड्रग। जैसे मिर्गी 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 को दूर करने के लिए, जैसे बहुत सारे लोगों को चक्कर आ जाता है, मिर्गी आ जाती है, उसमें ये गावापेंटीन का बहुत यूज होता है। और ये आर्टिकल हमारी पब्लिक मेड में फ्रिक्वेंटली जो हुई है, हमारे पास लोग कह रहे हैं कि आप जो है हमसे एसोसिएट कर लीजिए। हमने कहा भैया मैं केमिस्ट्री का आदमी हूं, हम मेडिसिन के आदमी नहीं हैं। आप ट्राई करिए, अगर आपको इससे फायदा मिलता है हमारे बनाए हुए नैनो पार्टिकल से, अपने मरीजों पर आप ट्राई करिए, हमको एसोसिएट करिए, हमारा भी नाम डालिए पेपर में। 10 20 50 मरीज 100 मरीज पे ट्राई करेंगे तभी तो पता चलेगा कि इफेक्टिव है कि नहीं है। सो दिस इज दी गावापेंटीन स्ट्रक्चर इज दिस। इसमें एनओएच मिलाया गया है। एनओएच मिलाने के बाद में हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड। सिल्वर नाइट्रेट इज अ वेरी कॉमन रिएजेंट, इट इज अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द लेबोरेटरीज। उसके बाद इसमें हम स्टरिंग करते हैं, ये कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो है आफ्टर सम टाइम इट फॉर्म्स ए काइंड ऑफ ए नैनो पार्टिकल। कैसे? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, फोरियर ट्रांसफॉर्म, एनर्जी डिस्पेसिव एक्सरे स्पेक्ट्रोमेट्री, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, पाउडर एक्सरे एक्सेट्रा, दिस कैन बी डन। नाउ यू सी 0 मिनट पर ये सिचुएशन है जब मिलाया गया, 1 मिनट पे, 2 मिनट पे, 3 4 5 मिनट पर आप देखेंगे कलर इज गेटिंग इंटेंसिफाइड। इट सिंपली शोज दैट समथिंग इज हैपनिंग इन द सॉल्यूशन। मैं कह रहा हूं कि ये नैनो पार्टिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, नैनो पार्टिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। सो दिस थिंग, और आप देखेंगे 300 से 560 नैनोमीटर के बीच में ये, दिस इज नोन एज द प्लाज्मोनिक बैंड। प्लाज्मोनिक बैंड का मतलब है जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी नैनो पार्टिकल के ऊपर, नैनो कोटिंग के ऊपर डाला जाता है तो कंप्लीटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाता है, और उस रिफ्लेक्शन के दौरान उस वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी देती है, दैट इज नोन एज द प्लाज्मोनिक बैंड। सो 415 इज द प्लाज्मोनिक बैंड। अब आप देखिए हमने क्या किया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम ये देख रहे हैं कि 450 नैनोमीटर के ऊपर आप देखिए 0 मिनट पर ये काला और ये लाल 60, इसका मतलब पीक की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब समय के साथ हमारा नैनो पार्टिकल बनता जा रहा है सोल्यूशन में। Similarly, now see, we can also characterize this with the IR, which is available in our department free of cost for us as test, and for also for outside students if you write a letter to the HOD chemistry. So this is the field emission scanning electron microscopy, FESM analysis. FESM में आप ऐसे कर सकते हैं, और आप देखिए इलेक्ट्रॉन TEM is a very costly technique which is available in the All India Institute of Medical Sciences. लड़कियां हमारे साथ में जो थी, उन्होंने बेचारी, वो सब सारे के सारे दिल्ली जाते थे बच्चे, रात में रुकते थे, हमने भी कुछ उसमें अपने सैलरी से पैसा दिया, हमारे, क्योंकि हम रिटायर हो चुके थे, हमारे पास फंड नहीं था, हमने आधा पैसा उनको दिया, आधा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, एंड दे गॉट देयर टाइम डन एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। सो दिस इज द टाइम एनालिसिस, हिस्टोग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिल्वर नैनो पार्टिकल, कितना जो है किस फ्रीक्वेंसी पर कैसे क्या हुआ, ये उन्होंने वहां से कराया। एलिमेंटल एनालिसिस किया कि कंपोजिशन क्या है, कितना सिल्वर है, कितना सिल्वर नाइट्रेट जो डाला कितना सिल्वर ऑक्साइड के रूप में है। तो एलिमेंटल एनालिसिस करने के बाद दिस इज द बार डायग्राम ऑफ ईडीएस ग्राफ फॉर द सिल्वर नैनो पार्टिकल वेट कंपोजिशन ऑफ ईच।
this thing. Now see this is a silver peak, and powder X-ray also has been done, performed at the physics department of Lucknow University. I am highly thankful to Professor Balak Das, who is an expert, and he was assistant professor at Ram Manohar Lohia University, and later he shifted to Lucknow University, and he retired also as a professor. He has helped me a lot in the powder X-ray analysis and in identification of different planes, 220, that is the indexing of the planes. So this was done by Balak Das ji, growth kinetic studies, but I have been expert in the area of the chemical kinetic. So I have utilized my knowledge in the study of the nanoparticle formation. Now you see, काइनेटिक्स करने के लिए क्या होता है, जितने भी वेरिएबल हमारे रिएक्शन मीडियम में होते हैं, हमने NaOH लिया है, गावापेंटीन लिया है, सिल्वर नाइट्रेट लिया है, और इन सब की कंसंट्रेशन हम वेरी करेंगे. जब एक की वेरी करेंगे, बाकी रिमेनिंग 3 की कांस्टेंट करेंगे, एंड सो ऑन. सो दिस वे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. दिस इज द growth kinetic study of Professor. Next one, sir. This is the kinetic plot shows that it obey the pseudo first order reaction kinetics. जो बच्चे पढ़ते होंगे, BSc में पढ़ते होंगे, ln A is equal to ln A 0 plus log K observed into T. अगर ln A को टाइम के अगेंस्ट में प्लॉट करें, this is the line of the form of y is equal to mx plus c, and from the slope you can find out the value of the K observed. Right? So this is the NaOH optimization. कितना NaOH आपने यूज किया? आप सिर्फ NaOH बदल रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट को कांस्टेंट कर रहे हैं, गावापेंटीन कांस्टेंट है, सिर्फ NaOH को बदल रहे हैं. नाउ दिस सिचुएशन. नेक्स्ट वन प्लीज. दिस इज द प्लॉट of the graph. This is an exponential type of growth. Similarly, this one, this is a function of NaOH. Next one. So how गावापेंटीन ऑप्टिमाइजेशन. अब हम गावापेंटीन को बदल रहे हैं, हम NaOH को कांस्टेंट कर रहे हैं, और हम सिल्वर नाइट्रेट को कांस्टेंट कर रहे हैं. सो दिस इज नोन एज द गावा ऑप्टिमाइजेशन. सारी चीज कांस्टेंट है, आप देखेंगे. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट वन. दिस इज यू सी, दिस इज द प्लॉट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और ये हम जो है इसका लॉग ले लेंगे जब, और टाइम के अगेंस्ट में प्लॉट करेंगे, स्लोप से हम आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं. सो दिस इज द, आप सिल्वर नाइट्रेट को वेरी करेंगे, और हम देखेंगे कि किस तरीके से सिल्वर नाइट्रेट हमारा रिएक्शन काइनेटिक्स के रेट पर क्या उसका इफेक्ट है. सो वी कैन डू दैट. सिमिलरली दिस इज द प्लॉट ऑफ द एब्जॉर्बेंस वर्सेस दिस थिंग फॉर द सिल्वर नाइट्रेट. और सारी चीज, सारे ग्राफ्स हैं, 3-4 वेरिएबल्स हमने चेंज किए हैं. और नेक्स्ट वन. दिस इज द सिल्वर नाइट्रेट. प्लॉजिबल मैकेनिज्म आप कैसे प्रपोज करेंगे कि हमारी जो है नैनो पार्टिकल कैसे बने, और आप देखेंगे दिस इज द मोस्ट टेंटेटिव मैकेनिज्म. कभी 100% करेक्ट नहीं होती. जैसे किसी स्टूडेंट ने मैकेनिज्म प्रपोज की, it is subjected to further modification and additional studies. आपने अगर कोई एडिशनल स्टडी भविष्य में की, तो आप ये कह सकते हैं कि नायक साहब ने जो मैकेनिज्म, या जो भी कोई नोबेल लॉरेट क्यों न रहा हो, उसने अगर कोई मैकेनिज्म प्रपोज की है, दैट मैकेनिज्म इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू मॉडिफिकेशन based on the additional experimental finding. So next one please. आप देखिए, it is this is the scheme 1. See, this is the gabapentin, alkaline medium है, silver nitrate डाला है. It is a 2 electron process. It is a 2 electron process. Now you see, it is converted into silver 0. It is converted into silver 0. And this is the process. पहले न्यूक्लिएशन होता है, फिर नैनो पार्टिकल की ग्रोथ होती है, धीरे धीरे बनता जाता है, और फिर जो है एडजॉर्प्शन होता है. कहां पर एडजॉर्प्शन होता है? सिल्वर के सरफेस पर. सिल्वर के सरफेस पर नैनो पार्टिकल का एडजॉर्प्शन होता है. एंड दिस इज द फर्दर थर्मोडायनेमिक एक्टिवेशन पैरामीटर्स, जो कि हम नैनो पार्टिकल के फॉर्मेशन को 3 टेम्परेचर पे कम से कम हमने स्टडी किया है. दिस इज द आयरिंग्स प्लॉट. उसको प्लॉट करेंगे, इससे हम तमाम सारे पैरामीटर्स डेल्टा एच, डेल्टा एस निकाल सकते हैं, जो कि हमारे मैकेनिज्म को सपोर्ट करते हैं. दे प्रोवाइड एन एडिशनल सपोर्ट टू द प्रपोज्ड मैकेनिस्टिक स्कीम. सो दिस इज द कंक्लूजन. सिल्वर नाइट्रो पार्टिकल, ये गाबापेंटीन जो है हमारा, ये रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से भी काम करता है, और ये स्वतः एक स्टेबलाइजर के रूप में काम करता है.
हमको माइसिल नहीं डालनी पड़ी इसके अंदर स्टेबलाइज करने के लिए। अगर ये स्वतः स्टेबलाइजर रिडक्टेंट तो है ही है, स्वतः स्टेबलाइज कर देता है नैनो पार्टिकल को। अगर ना कर पाता जैसा कि हम लोगों ने देखा है इसके कलर से कि 72 घंटे 5 दिन तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ा कलर में, इंटेंसिटी में, नहीं तो हमको माइसिल डालनी पड़ती उसके अंदर। हमको माइसिल नहीं डालनी पड़ी, इसका मतलब ये स्टेबलाइजर के रूप में भी काम करता है और रिडक्टेंट तो है ही। So this paper is now published in the ACS Omega recently. So the last slide. So I have taken a lot of time. So I am sorry for this thing, for that. Thank you for a very inspiring and detailed talk, and it's really enlightening. I would like to ask if students have any particular question. Just one question, please, just to limit the time. क्वांटम डॉट्स कोरिलेट क्वांटम डॉट्स की जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन है, द वर्ड क्वांटम डॉट हैज कम फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम डॉट की जो साइज है that is also in the nano. Nano means that size also falls between 1 to 100 nanometer. तो इसलिए नैनो पार्टिकल को हम क्वांटम डॉट्स भी एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं। That name was given theoretically. It is not the experimental name. तो जो क्वांटम डॉट्स जो है, जो थ्योरेटिकली प्रिडिक्टेड है कि भाई क्वांटम डॉट क्या चीज होती है, तो क्वांटम डॉट की जो साइज आप चाहे किसी प्रोग्राम से, डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी से, कहीं से भी क्वांटम डॉट्स को करके उनकी साइज आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी जो साइज है वो दैट फॉल्स वेल विद इन ए वेल डिफाइंड नैनो पार्टिकल। तो इसीलिए हम उनको क्वांटम डॉट भी कहते हैं। Thank you, Professor. And it's very नहीं, डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, वो टारगेट को हिट करते हैं। सेल स्पेसिफिक इसलिए बनाती है क्योंकि जब वो मेडिसिन वो कैंसर इन्फेक्टेड सेल नैनो पार्टिकल के रूप में दी जाती है, चूंकि इनका साइज इतना छोटा है। अब आप ये सोचिए कि सिस्प्लेटिन थेरेपी आप देते हैं, बल्क में आप देते हैं, कंटिन्यूअस ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, तो वहां भी तो आप ये कह सकते हैं कि कैसे आप ये इंश्योर करेंगे कि जो थेरेपी आप दे रहे हैं वो कैंसर सेल को ही हिट कर रही है, इधर उधर नहीं जा रही हो। हम तो एक छोटे मतलब स्केल पर एक 1 to 100 नैनोमीटर की पार्टिकल को इंजेक्शन के थ्रू, कैप्सूल के थ्रू बॉडी में दे रहे हैं, तो जब वो ब्लड में जाएगा, प्लाज्मा में जाएगा, तो जो जहां जहां ब्लड सर्कुलेशन होगा उसके थ्रू नैनो पार्टिकल टारगेट पर भी पहुंचेगा, जैसे दवाई पहुंचती है। तो वो टारगेट पर इतनी छोटी साइज है, वहां जाके वो हिट करेगा। अब हिट करेगा तो अगल बगल की जो हमारी हेल्दी कैंसर सेल्स हैं वो डैमेज नहीं होंगी, क्योंकि उनको धक्का नहीं लगेगा। Thank you. हाँ, देखिए इसमें बायोलॉजी इन्वॉल्व है, इसमें बायोलॉजी इन्वॉल्व है। आई एम ए फिजिकल केमिस्ट। इट इज बेटर दैट इफ यू आस्क टू ए मैन ऑफ द डॉक्टर हु इज वर्किंग इन द फार्माकोलॉजी और अदर डिपार्टमेंट, he will reply you. I can reply, but not to that satisfaction, क्योंकि वो जो है वो आप बिल्कुल रिसेप्टर से जाके बाइंड करेगा और स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है वहां पर। और वो जो है एसजीपीजीआई के लोगों ने, अब हम तो उसको समझ नहीं सकते, उनके पास में इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वो देखते हैं उसको मशीन पर कि कहाँ जाके किस सेल को उसने हिट किया। Thank you for your better understanding. Please read two topics, one up conversion and other called nano confinement. Just Google it and you will get your answer. Nano confinement and up conversion. Thank you, sir. Now our next speaker is Dr. Tawqir Ahmad Khan. He did his PhD MSc from M.L.K. PG College Balrampur in chemistry in 1996. PhD from IIT Kanpur
in 2006, postdoc from Germany. Currently, he is working as a research scientist at Max Planck Institute of Multidisciplinary Sciences, Göttingen, Germany. He is working with Nobel laureate of 2014, Professor Stephen Hall. He has approximately 25 research journals, research articles published in reputed journals. Uh, his current work is fluorescence bioimaging super resolution microscopy. His topic of today's talk is design and synthesis of fluorophores for protein labeling and bioimaging with optical nanoscopy. Dr. Tawkir, are you listening us? Dr. Tawkir. Unmute yourself, Dr. Tawkir. Okay, can you hear me now? Yeah, you are audible. Start your lecture, please. Okay. Uh, sound is resonating. And can you see my hello? Yes, sir. Can you see my screen there? Okay, good. Then I'll start. Yeah, thank you. Huh? Okay, so a very good afternoon, all the guests and participants in this conference, international conference. As we can see by the name, the given is application of chemical sciences. So we know the chemical sciences is chemistry. And I'm sure here many guests and participants, they are non-chemistry background. So for them, I can say, like chemistry is everywhere, right? So all the materials, what we see around us is everything is chemistry. And application, if you talk about the application of the chemistry, then again, everywhere the chemistry, the road we walk on that's the asphalt, right? The chemistry. The medicine we eat to protect from the disease is just the chemistry. In agriculture, the pesticide, insecticides we make, to produce the more grains, it's just the chemistry. In energy sector, based on the chemistry, materials, chemistry make like all the materials we use around. Say in the television, the screen is a chemistry. This a smartphone screen is chemistry. So everywhere the chemistry. Chemistry worldwide, like a lot of research is going on further to improve the chemistry in the science to gain the knowledge. Why we gain the knowledge? Because based on this knowledge, we can solve our problem as a humanity, whatever challenges we are facing, so that we can make our life more comfortable, we can make our life safe. And in broad base, all the chemistry, generally we have said physical chemistry, inorganic chemistry, organic chemistry. But based on its application, many more disciplines and branches are there. Like I'm an organic chemist, got training in the organic chemistry. And in organic chemistry, another thing is there that is called as synthetic organic chemistry. And in synthetic organic chemistry, what we do, we make the molecules. So we construct the chemical compounds, whether there's existing already in the nature, or we make the new compounds based on our requirement and application.
So as you can see on the screen, the topic I'm working utilizing this organic chemistry to solve the biological problem in the biomedical research. And my topic is design and synthesis of fluorescent compounds, organic compounds for protein labeling and bioimaging with optical nanoscoping. So if you go to the next slide, we can see here, it's written the fluorescence bioimaging. I think the time I can see. Okay. We know the bioimaging. I think most of the people have gone through in video, like X-ray, image our inside the body, the CT scan, we know the MRI. So bioimaging actually is like non-invasively seeing inside the body. That's the bioimaging. But here what I'm going to show you, the fluorescence bioimaging, means in this bioimaging protocol, we use the fluorescence material, fluorescence compounds. Like you can see the picture, the right side here, the mouse, the two mouse, one is without the treatment of fluorescent material. The other one, we can see the red spot. This what is a cancer tissue in the mouse treated with a fluorescent compound, and with light, we can see where is that tissue. The second mouse, we can see the whole body. We put inside the fluorescent compound, and we can see the whole organism. Right side is this is the cell structure. We can treat with a different fluorescent compound, and we can see the multicolor structure of a cell. So actually, I want to add one more thing. This fluorescence bioimaging, of course, we can bioimage whole body, a tissue or cell, but it is more relevant to the cell, intracellular, or we can say the subcellular structure, because in biology, in the cell biology, life science, and the medical research, the cell and subcellular things are very important. Okay, so the next slide, I will show you the headline is fluorescent compounds, fluorescent dyes are fluorophore. So these fluorescent molecules, they are the organic compounds. Yeah, as you can see, the two structure, rhodamine 6G and the cyanine 5, they are the organic compounds and conjugated pi system with the benzene ring. Yeah. So what happened? These organic compounds, if you irradiate the light or when they absorb the light, what happens is the electron in the pi conjugated system, it gets excited and it goes in the excited state. And after that, it comes down and it gives back the light, whatever the light it absorbs, it gives. But it makes a difference. The difference is when it absorbs the light, it is higher in energy. But when it emits the light, the energy is less, or we can say it's a longer wavelength. That is called as fluorescence. And you can see the right side is absorption and emission, a spectra of dye. So we can see here the absorption is 525 nanometer, but when it emits the light, its wavelength is 550. So there is a difference of around 25 nanometer. That's the spoke shift. That's the fluorescence. Okay, at the next slide, so what happened is we can see here the images of subcellular. So right side is a schematic diagram, is the cell. The left side is the molecule, is outside of the cell. And we put the molecule or organic fluorophore inside the cell. It goes and it binds to the target, whatever we want to see, like the subcellular structure, mitochondria, nucleus, or any particular proteins. So what is the bioimaging actually is nothing but the light is coming from the fluorescent dye that we can see. The right side, we can see a beautiful cell structure. How we are able to see inside the cell is nothing but to put our fluorescent dye, the chemical compound inside, and put the light, and it emits the light, and we capture this light as an image, and we can see structure. The next slide, we can say, okay, the fluorescence bioimaging actually is an interdisciplinary research. So one field cannot do this research. So this is the collaborative work of chemistry, the biology, and the physicist, or we say biophysics. So what happened here, as a chemist, what we do, we decide or design an organic compound, a molecule, a fluorescent dye, based on a desired property, and then we connect it with the ligand to bind inside the cell. And after that, what we need, biology, what they do deal with the biology things. Like here,
They do the cell culture, arrange the cell, what kind of cells, what kind of tissue, and then we stand with our dye. And then the other department is the physics or the biophysics. They use the technology, the microscope to image it, get the picture, the image of the cell or the protein in the living system. Okay, so here I want to show you, we know that what is the fluorescent material, what is the fluorescent compound, and it goes inside the cell, and it binds with the protein or subcellular structure, and we can see it. But now the challenge is how we can put these organic compounds inside the cell where our target is there. So that is called as a labeling protocol, a technique, and the bioconjugation. So the first protocol, a technique is fluorescent dye conjugating with antibody. You can see the left side on the top. Sorry, I don't have the pointer to show you here because I don't have the mouse here. So, you know, it is written antibody. Antibody, we know. Antibody is a protein that is a part of our immune system. So we can, you know, our immune system develop the the antibody for the antigens, or in the biology, we can produce these antibodies for any kind of proteins. Okay, so we take the antibody, and in antibody we have the free nitrogen and sulfur. So we can see here I'm showing the connection of the dye. So these amine we can react through the linker with our dye, right? And then we can get the dye conjugated with the antibody. Okay, and this antibody with the dye we put inside the cell. Yeah, and this antibody then goes inside the cell and it can bind to the particular protein what we want to see. When it binds it, yeah, then we throw the light on that, it emits the light, and then we can see the clear picture of the protein of the target inside the cell. And the second way for the labeling is we can connect a ligand, a small molecule like a drug. Here you can see docetaxel is a drug for the cancer, is a derivative of the taxol molecule. So we can connect through the linker with the dye or the fluorophores in the red color, right side you can say. And then this ligand with the dye, again, we can put in the cell. And this ligand again goes and bind a particular protein. And then again, we can visualize it. We can get the image. And the third one is fluorescent dye with a self-labeling tab. So what happened here is the scientist has discovered a special protein that through the genetic engineering, we can put inside the cell and connect with our target protein. Yeah? So we can create a ligand, like here it is mentioned in the third one, the last, is a halotag ligand. So this alkyl chloro compound, when you connect with our dye, okay, and put inside the cell, so the right side you can see it's POI means protein of interest, HT means halotag protein. It goes and covalently bind it. Then our dye got and stick with a particular protein and we can image it. Okay, so in next slide is subcellular labeling with fluorescent probe. We can see the left side is again is a schematic diagram. So in the picture we can see the light blue is the extracellular. On the right side we can say intracellular, and the cell membrane is there. What we do here, we can say the dye, and the pink magenta color, the circle is a ligand, is connected together, put inside the cell. Molecule moves, and the ligand or the antibody, it goes, and the right side, the green color, it binds with the protein. It is connected there, and then put the light again through the laser, and it emit the light, and we get the image. So you can see here the two beautiful image. On the top is a black, and the red color is written. One seed is a black. You know why? Because there is no dye. So if you take the living specimens, a system, and put the light, laser light, then you see the black. There is nothing. The right side, if you see, is a beautiful cell structure, red color. So what happened? It is stained with the dye of fluorophore organic compounds. And when you put the light, it emits the light, and we get a beautiful picture. The downside, another picture is there, is a multicolor image of a cell. In the middle, you can say orange color, that's the nucleus. Is stained or labeled with a particular dye. And the magenta color is
Tubulin is a protein inside the cell in the cytoplasm, is stained with the other dye, and the green color, you can see the lysosome, is with the other color dye. Okay, so here is an interesting thing. What happens is, we can do bioimaging is a whole organism. Like we can say the mouse structure, we can visualize the whole body of inside of the mouse, but the shapes matter here and the size, because mouse or any living organism size is big. But if you go to the tissue level, again it's smaller, we can visualize the tissue. But the next, which is so important for modern research in biomedical science, because this is the very basic for life. You know, if you have any disease, like we have cancer or diabetes, you cannot solve from outside. You have to go at the cell level, because everything's happened in the cell. All the physiological reaction and changes happen inside the cell. Protein synthesis happen inside the cell. Gene expression controlled by the DNA inside the nucleus. So the visualization of cell and inside the cell, all the reaction, the mechanism understanding is very crucial and important for life sciences, cell biology, and biomedical research. So if we can understand inside the cell, yeah, then it will help us to solve the problem in the biology. And so here, fluorescence bioimaging play a major role how to solve this problem. So whatever the known technique in the fluorescence microscopy, normal microscopy, that is confocal and wide field is there. There is a problem with that is the size limit. So we can see the cell, we can visualize it. If you go inside the cell, we have many subcellular structure like mitochondria, Golgi complex, endoplasmic reticulum, a nucleus, DNA, chromatin, everything. Yeah. So the right side, you see the organelle, 200 to 700 nanometer is the mitochondria. With the normal light microscope, we can see it, but there is a point. If you want to see the further, anything smaller than 200 nanometer, we cannot see it. Like right side, you see the biomolecule. If you want to see any protein, any DNA inside the cell, how it works, how it moves, we cannot see. The reason is the diffraction limit. One of the concepts in the physics or in the light is given by a famous physicist Ernst Abe. What he says that give the theory, if any molecule or any structure, anything is between the range of 200 nanometer, we cannot see it, we cannot distinguish it, we cannot discern it. The reason, because of the diffraction of limit. That was the end. So anything smaller than that, we cannot see in the living system or any material. Okay, there was a problem. Then how to advance further? So the scientists all over the world, they were doing so much hard work and the research to overcome this problem, and it happened. So before I go that one, I want to show you here. So it is written by Abe. That is a formula he gave. That D is equal to lambda divided by 2NA. That is around 200 nanometer. So what is lambda is the wavelength of the light, what we use in the microscope. So generally in the visible light, we use from 400 nanometer till 1100 nanometer, 1200 nanometer. So if we use a 500 nanometer light for the microscopy, maximum size we can see is 250 nanometer or minimum 200 nanometer. If anything is smaller than 200 nanometer, we cannot see it. As you can see, the picture is SMLM. So if you see the left side is a blur with a normal microscope, you cannot distinguish further. But if you use the advanced technique that is called as super resolution microscopy or the nanoscopy. The microscopy, why we say it? Because we see the things in the micrometer. Nanoscopy means we see the things in the nanometer, right? So you see the down, it is written IIT. The normal microscope, you see IIT, but it's a blur. You cannot go further down to distinguish what is beyond that. But if you use the super resolution microscopy, the right side is written IIT, but you find so many dots. How it is possible? Because chemistry and the physics, they work together and they develop the new technology, new method that is called as super resolution microscopy. And for this fantastic work, and that is called as a revolution in resolution, was awarded a Nobel Prize in 2014
three scientists and Professor Eric Batzik in US and Professor Stefan Hell that I'm working with here in Germany, and the Professor William Martin in US. So the next, here I'm showing the two picture, how this super resolution with the help of chemistry, it solved the problem in visualizing the smaller things in the living system. So right side we can see a platelet structure. The first is the confocal, where we can say everything is a blur. You cannot, clear what is further down. The right side is a technique that is called a SPECT microscopy, is advanced microscopy. Here we can see the different spots in the protein particular. On the right side, there is another image, that is the image of the mitochondrial protein. Here the A you see is like a confocal microscope, is like a raw. The red color is so blurred, we cannot see down. But if you come down, the structure B, that's the SPECT microscope. Here, still we can distinguish up to 20 nanometer we can see. Yeah? Then there is another very advanced nanoscope that is called as a MINSTEP. The right side we see the C. Here, even we can see the structure at 1 to 2 nanometer. Okay, so in this slide, next slide, I'm going to show you the different technology and method that have been developed in advanced microscopy or the nanoscopy. There are a few. You can see the SML, like single molecule localization microscopy. There are PALM and STORM. And the downside, you say STED, MINFLUX, and MINSTED. These three techniques is developed by our lab, by Professor Stefan. The STED, it was invented 10 years before. With that, we can see the 20 nanometer scale, anything. And the MINFLUX and MISTED is a very advanced. Recently, we have invented it. With that, we can see a single molecule, a protein, organic compound inside the cell or any material. You imagine, we synthesize the compound, many things, plastics, medicine, everything. But if you make it in grams, we can see it. Imagine, you can see a one molecule with the help of light. It's such a fantastic thing. So here now the chemistry play again a major role here because of this advancement in this nanoscopy technique, because that depends on the fluorophores, the organic compounds, that's the fluorescent dye. So there's more challenge for the chemist because of this technology. We need a new dye with the desired property. So the chemist, again, we have to design the molecule, we have to synthesize it, and we have to study the property and go for their application. So the downside, we can see the fluorophores, they are common, the organic dyes we use, like coumarin, fluorescein, rhodamine, cyanine, and borderby, many more are there. Okay, so in this slide, I want to take through you my research work. We have published in Chemical European Journal and AnguChem. And so that is called as photoactivatable case dye. I want to show you and tell you about what is photoactivatable case dye. So if you see the structure here, this two structure in the top is written the cage dye and the fluorescent dye. So what is cage dye is, again, is the dye molecule, is organic fluorophore, but it is in non-fluorescent state. Means once you put the light, it's not going to absorb the emit light because it is caged, or we can say it is inactivated. Yeah. But when we put a particular light, like UV light, then you can see on the top, like the carbamide structure on the nitrogen, we can deprotect it. We can remove the group, and then this dye again become active. So this is called as photoactivatable cage dye. Means we can activate this dye by light. Photo means light, yeah, photon. Cage means it is, you can see, I give example, there is a bird in the cage. Yeah? It is a bird, it has a wing, it can fly, but cannot fly because it is caged. But if you open it, it can fly and go away. Same way, this molecule, it is caged by the two protecting groups, but if you put the particular light with a particular wavelength, we can deprotect it, yeah, and the molecule become in fluorescent state, and it helps solving in nanoscopy. And the downside, I've given the mechanism in short, like how we can deprotect it.
Okay, so how the photoactivatable fluorophore helps in a nanoscopy. So here I have given the example. The molecule what I synthesized was used in the min-flux nanoscopy. You can see the left side, cage type, you put the structure of the lock. So what happened is it is locked, means it is not in fluorescent, it will not fluoresce, it will not absorb the light and emit it because it is locked. But when we put the particular wavelength light, then it get on, it is unlocked and become fluorescent, right? Then we image it, okay? And then it's bleaching, means like if you image again and again, put the light, the molecule, it decomposes, and that is called as bleaching, means it further, it will not give any light. And the next right side I have shown in the green square is see the dot with the blue is like we can say the protein in the cell, and it is tagged with our dye, right? So we know that if the two dyes are close, very close, in the area of 200 nanometers, so with the normal microscope, because the diffraction limit, we cannot see, it will blur it. Okay, so why this photoactivatable dyes helps here? What we can do first, we label the protein with the activatable dye. It means the dye are inactive. So then we put the light, very small portion of the light, and activate the few molecules, not all. So you can see like 1, 2, 3, 4, 5 molecules got activated like this star shape, right? When it becomes active, then we image it. Then we bleach it. Yeah? Then again put the light, activate more molecule, then again image it. In that way, we can get the whole image, and it is with resolution. Resolution means we can go up to 1, 2 nanometer scale with this min-flux technology. And the downside also, there's a ring. I have shown how to understand this photoactivatable fluorophore. There's a ring of the protein, we can say, and it's labeled with a dye. So what we do, the visfat photoactivatable dye. Yes, Dr. Sir. Okay, oh yeah, just finishing. Yeah, yeah. Okay, so here I have shown the structure, how to design this photoactivatable dye. And so we are short of time. We cannot go up. I'm talking in very general, so we can understand that. And here I have shown the synthesis. And I design a molecule for this, and I've synthesized it. And here, after synthesis, we do activation and study the property. And I have shown here the beautiful image. So you can see the molecule, and then we put inside the cell and image it, and to understand the protein structure. And here we have extracted a beautiful 3D video from our min-flux imaging. So what we do, what the molecule we have synthesized, we put inside the vimentin protein inside the cell, and then we activated and got the image. So what we see here, the colorful is nothing, is the light coming from the fluorophores that's bound to the targeted protein inside the cell. So by this understanding, what is the importance of getting the images of the proteins and all, because it solved the problem in the biomedical research by understanding the reactions and everything what is happening inside the cell. So with this, I conclude, and thank you very much for your attention. I try to explain, but because of the shortage of the time, I don't know whether you can understand. And now I acknowledge the people here at my institute, and thank you very much for your attention. Thank you. Thank you, Dr. Tawfiq. Very inspiring talk, and I can see a lot of work and very particular targeting your protein with a specifically designed molecule, which is really going to be boost for the medical science. Thank you very much. Just for the time's sake, I would like to ask you if you have any question, please direct to his email. That will be fantastic. Thank you, Dr. Tawfiq.
ICMACS 2024 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अगली टॉक है वो प्रोफेसर आर एम नायक सर की है। सर IIT BHU से हैं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। सॉरी, वी रामनाथन सर की है। वी रामनाथन सर ने PG अपना 2003 में श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग आंध्र प्रदेश से किया। PhD आपकी IIT कानपुर से है 2008 में प्रोफेसर टी चक्रवर्ती ग्रुप से। सर 2011, 2010, 2008 में आपने पोस्ट डॉक किया है यूनिवर्सिटी ऑफ स्टुटगार्ट जर्मनी से, यूनिवर्सिटी ऑफ बेसेल स्विट्जरलैंड से और सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया से। अभी तक सर के 72 रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में। और करेंटली सर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट IIT BHU में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। और एरिया ऑफ रिसर्च है सर की वो है लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इमेजिंग एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। आज की टॉक जो सर की है उसका टॉपिक है ग्लीनिंग साइंटिफिक टेम्पर इन एंशियंट एंड मेडुअल भारत। तो रामनाथन सर प्लीज। रामनाथन सर के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने कलीग डॉक्टर संजन पांडे सर को। डॉक्टर संजन पांडे सर अस्मिचिन अंगवस्त्र देकर सम्मानित कर रहे हैं डॉक्टर रामनाथन सर को। तालियों से स्वागत कीजिए आप लोग। सभी को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आयोजक करताओं को मुख्य रूप से प्रोफेसर सुनील मिश्रा को मैं अभ्यंतर से आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस संगोष्ठी में अपने कुछ विचारों को प्रकट करने का एक अवसर प्रदान किया। और यहाँ आने के बाद मुझे मेरे IIT कानपुर के पुराने मित्रों से भी मिलने का, उनसे परिचय बनाने का अवसर पुनः प्राप्त हुआ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस M.L.K की इस
कॉलेज का और मेरे साथ अभी जहाँ वर्तमान समय में काम करता हूँ उसका भी बहुत घनिष्ठ संबंध है। यहीं के राजा ने हमारे संस्थान के बाउंड्री वॉल को बनाया था, तो उस दृष्टिकोण से भी एक निकटीय संबंध है। तो मेरा जो टॉक होगा बहुत ही विषय से हट के है। आपके कॉन्फ्रेंस का जो थीम है, आयोजकर्ताओं का एक ये था आदेश था कि आप ये भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में जो भी मेरा एक शोध का एक विषय है उस पे इस वक्तव्य को केंद्रित कीजिए। तो दैट इज व्हाट आई विल बी स्पीकिंग टू यू इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स एंड विथ मच अडू आई विल so ideally prepared the talk for a longer time, but due to shortage of time I'll skip a lot of points, directly come to the topic. जब भी क्या होता है ना कि हमारे देश के बारे में अगर हम जैसे लोग भारतीय लोग ही बोलें तो घर की मुर्गी जैसे दाल बराबर हो जाती है। जब तक कोई गोरा जो है इस पर अपना थप्पा नहीं लगाता है तब तक उसकी कोई मान्यता नहीं होती है। तो उससे प्रेरणा लेते हुए मैं अपना ये वक्तव्य शुरू करना चाहता हूँ। और ये भी हमारे एक नोबेल लॉरेट रह चुके हैं केमिस्ट्री के ही, और उनका क्या क्या कहना है केमिस्ट्री को लेकर के। द कंट्री विच इज इन एडवांस ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन केमिस्ट्री विल आल्सो बी फॉरमोस्ट इन वेल्थ एंड जनरल प्रॉस्पेरिटी। मतलब जो देश केमिस्ट्री रसायन शास्त्र वाले एरियाज में प्रबल होंगे वो प्रबलता उनकी आर्थिक संपदा में भी झलक उठेगी। इस वक्तव्य का जो है वो कपोलकल्पित बात नहीं है। अगर आप देखेंगे देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ नोबेल लॉरेट्स इन केमिस्ट्री वर्सेस द जीडीपी। तो यही कहना नहीं है कि जीडीपी के कारण नोबेल प्राइज मिला या फिर नोबेल प्राइज के कारण जीडीपी बेहतर हुआ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बट दोनों के बीच में कोई संबंध है, कार्य कारण संबंध है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बट कोरिलेशन है दोनों के बीच में। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप इस ग्राफ पे अपना ध्यान को आकर्षित कीजिए। ये बहुत ही अपने आप में एक विलक्षण स्टडी था। आज से 20 साल पहले ये छपा। एक अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन थे लंदन में, उनको यूनाइटेड नेशन ने एक कार्य सौंपा था प्रोजेक्ट के रूप में कि आप पूरे विश्व का जो जीडीपी है, पूरे विश्व का जीडीपी पिछले 2000 सालों में क्या रहा इसका आप शोध कीजिए। उन्होंने किया और ये ईसा के पश्चात जितने भी साल 2000 साल हैं उनका डेटा है ये। और वाई एक्सिस में देखेंगे परसेंटेज है। परसेंटेज क्या दर्शाता है कि वैश्विक स्तर पर कितने अमुक देशों का योगदान कितना रहा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1500 साल तक पूरे विश्व स्तर में भारत और चीन का ही एक तरह से अधिक योगदान रहा पूरे विश्व स्तर पर आर्थिक व्यवस्था को लेकर, विश्व की आर्थिक व्यवस्था को लेकर। उसके बाद क्या हुआ, दोनों कंट्रीज में पतन हुआ और आज हम कहीं तो 20 साल पुराना डेटा है बट आज भी हम ये 10% तक भी हम छू नहीं पाए। तो ऐसा क्या रहा जिसके कारण हमारे यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स आए, ट्रेडर्स आए, इन्वेडर्स आए। तो क्या वो पर्यटन को के आधार पर आए थे क्या, या फिर केवल ज्ञान अर्जन करने के लिए आए थे? कुछ तो आर्थिक संपदा रही होगी, वरना ऐसे ही भारत को सोने की चिड़िया का दर्जा नहीं दिया जाता था। The wealth that was generated perhaps attracted our visitors, and that wealth, अगर आप पहले वाले स्लाइड्स पे कोरिलेट करेंगे तो जब तक हमारा देश रसायन शास्त्र, धातु शास्त्र, मटेरियल साइंस पे प्रबल नहीं रहा होगा तब तक वो आर्थिक व्यवस्था में भी इतना बड़ा योगदान कर नहीं पाता होगा। तो यहाँ निष्कर्ष ये है, क्योंकि हमारी आर्थिक संपदा बहुत कुशल थी, इससे ये निष्कर्ष निकल के आता है कि हमारा जो कुशलता थी रसायन शास्त्र, मटेरियल साइंस, धातु शास्त्र इत्यादि क्षेत्रों में भी वो भी प्रबल रहा होगा।
दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि अभी भी आपने सुबह 2 लेक्चर सुने और अभी शायद वक्ता नहीं है, तो मैं कॉन्फिडेंटली नहीं कह पाऊंगा, वरना वो वक्ता होते तो मैं सटीक रूप से कह पाता इसको, कि जब एक वक्ता अपने नैनो मटेरियल्स की हिस्ट्री को बता रहे थे, तो जो जिन बच्चों ने सुना ध्यान से, तो वो इतिहास कहाँ से शुरू हुआ? साबित कीजिए कि आप सो नहीं रहे थे या सो नहीं रहे हैं। 2000 साल पहले, और ग्रीक से शुरू हुआ। तो ऐसा क्या है, मतलब मैं पूरा नहीं जानना चाहता था कि कहीं उस श्रृंखला में भारत का नाम कहीं आया, वास्तव में नहीं आया। तो मतलब भारत में इसकी ज्ञान नहीं थी, अथवा ज्ञान थी हमें उसकी ज्ञान नहीं है, ये सब प्रश्न चिन्ह उठते हैं फिर, है ना। तो ये एक पाठ्यक्रम के मार्ग से हमें हमारे भारतीय पुरातन में क्या ज्ञान था विज्ञान और तकनीकी के विषयों में, इससे हमें वंचित रखा गया, व्यवस्थित रूप से अथवा अव्यवस्थित रूप से, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बट सत्य ये है कि हमें हमारे धरोहर में जो विज्ञान और तकनीकी के बातें हैं, उनको हम तक पहुंचाया नहीं गया, जिसका कारण हम अभी देख सकते हैं कि एक वरिष्ठ वैज्ञानिक को भी जब एक इतिहास का मिसाल देना होता है, तो वो यूनान से शुरू करते हैं। सॉरी, अब क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर की बात आती है, और ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के दौरान सेक्शन 51A(H) में अगर आप देखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में डेवलपिंग और प्रमोटिंग साइंटिफिक टेम्पर अमंग द इंडियन पॉपुलेशन को जोड़ा गया है। तो इससे ऑब्वियसली एक सवाल उठता है कि क्या इमरजेंसी से पहले अथवा इवन 1950 से पहले हमारे यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर नहीं था क्या? लोग सिर्फ कपोल कल्पित बातें करते थे, अथवा एट द मोस्ट क्या कोई कविता ही लिखते थे क्या? उस विषय पे 2-3 मिनट में बोलते हुए आगे बढ़ूंगा। ये चित्र जो आप देख रहे हैं, ये फेमस गलीलियो का है। मतलब ये एक चित्रकार का एक काल्पनिक चित्र है, किसी ने फोटो नहीं खींचा है, इसको उस तरह से मत लीजिएगा। ये गलीलियो है, और इसको द फेमस गलीलियो ट्रायल बोलते हैं, जिसको चर्च के सामने अपना जो नया वैज्ञानिक आविष्कार थे, जो नई वैज्ञानिक सोच थी, वो अब स्वयं गलीलियो की नहीं थी। गलीलियो एक श्रृंखला में आ रहे थे, उनसे पहले टाइको ब्राहे थे, योहान केपलर थे। इस श्रृंखला में जब वो अपने सिद्धांत को आगे रखे समाज में, तो क्या देखने को मिला कि जब उस समय जब वो अपने सिद्धांत को आगे रखे, तो चर्च द्वारा जो समाज में जिसका पकड़ था चर्च का, उस सिद्धांत से बिल्कुल विपरीत। तो दोनों जब कोई विपरीत मत आपस में टकराते हैं, तो या तो आप विवाद करके उसको सुलझाइए, या फिर एक दूसरे को मार के सुलझाइए। ये दोनों तकनीक हमारे इतिहास में रहे। तो यहाँ पे गलीलियो को मारने की नौबत थी, तभी एक ट्रायल होता था दिखाने के पहले, मारने से पहले भी कि देखो हमने तुम्हारा पक्ष सुना। तो ये गलीलियो अपना एक्सप्लेनेशन देता है, सिद्धांत को कई भाषाओं में समझाने का प्रयास करता है, और उसके बाद क्या हुआ वो इतिहास का एक अंग है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। तो इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पाश्चात्य देशों में एक सटीक विभाजन बना रिलीजियन और विज्ञान के बीच, रिलीजन और साइंस के बीच। यहाँ पे मैं भाषा पर भी आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूँ कि साइंस इज नॉट विज्ञान, और रिलीजन का प्राय हिंदी में क्या बोलेंगे, रिलीजन इज नॉट एक्चुअली धर्म। रिलीजन और धर्म में जमीन आसमान का अंतर है। उसका बहुत ही निकटीय शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं, बट धर्म और रिलीजन में बहुत अंतर है, उस विषय में मैं नहीं बोलूँगा। बट हम अंग्रेजी तक ही सीमित रखते हैं साइंस और रिलीजन में। तो इन टकराव के कारण उस समाज में ऐसा आया कि इवन व्हेन यू हैव टन्स ऑफ एविडेंस, डाउट व्हाट यू सी, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ साइंस। और रिलीजन, इवन विदाउट अ सिंगल पीस ऑफ एविडेंस, बिलीव इन व्हाट यू कांट सी। तो ये दो विपरीत मत समाज में, और ये 1600 शताब्दी से नहीं, अभी तक ये एक तरह से बरकरार है। अब इसको आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, तो इस तरह के, इसको अगर मैं बोलूं कट्टरपंथीवाद,
फीडबैक आ रहा है, आपका माइक ऑन है क्या? कई बार फीडबैक आ रहा है। हाँ, इसको लेके चलो जाइए। ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे, इस तरह के कट्टरपंथीवाद क्या हमारे इतिहास में हमें देखने को मिलता है? अब जब कहेंगे हमारा भारत का इतिहास, तो ये मात्र 1000 साल तक आप इसको सीमित रखेंगे या 2000, 3000, 4000, तो उसमें भी अपने आप में एक विवादास्पद प्रश्न चिन्ह लगता है। ये एक मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, भले ही ये संस्कृत में है, बट इतना मैं बता देता हूं कि इसमें क्या लिखा गया है। ये है एक ग्रंथ का नाम शिष्य वृद्धि द तंत्र। शिष्य धी वृद्धि द तंत्र। शिष्य का धी धी यानी बुद्धि, उसके वृद्धि करने के लिए एक तंत्र का रचा गया है, जिसका नाम है शिष्य धी वृद्धि द तंत्र। उसके 16 अथवा 17 अध्याय हैं। एक उसका अध्याय है मिथ्या ज्ञानाधिकार। पूरे इस अध्याय में ग्रंथकार ने उस समय उस समाज में जितने भी एक तरह से कह लीजिए अंधविश्वास थे या कुछ भी कुरीतियां थी, कुछ भी विश्वासें थी, उनका एक एक करके उल्लेख करता है और उसका खंडन करता है। उदाहरण स्वरूप देखेंगे, असुरो यदि मायया युतो नियतो अतिग्रसीति इति ते मतम गणितेन कथम स लभ्यते गृहकृत पर्व विना कथंचन। अर्थात अगर तुम्हारा ये मानना है कि जो ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ये अगर असुरों के द्वारा सूर्य अथवा चंद्र को खा जाने के कारण हो रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने गणित के माध्यम से वो असुर कब प्रकट होंगे उसका भविष्यवाणी मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना? इस तरह से एक उदाहरण था। एक और उदाहरण शायद मैंने दिया होगा यहाँ पे। एक मान्यता है, अगर आपके भी संस्थान के अगर वो जो 1892 का जो बना हुआ एक ढांचा है, उस पे देखेंगे जो एक शिखर है, शिखर के नीचे हाथी का, चारों कोनों में हाथी का आकृति बनाया होगा। तो एक वास्तुकला में एक मान्यता है और एक तरह से अंधविश्वास भी ये परिवर्तित में इसका परिवर्तन होते हुए हम देखते हैं समाज में, जहाँ पे मान्यता है कि जो पृथ्वी जो है वो एक तरह से एक सपाट वस्तु के ऊपर टिकी हुई है और वो सपाट वस्तु 8 हाथियों के ऊपर टिकी हुई है, फिर एक कछुए के ऊपर टिकी हुई है इत्यादि। इस विश्वास पे ग्रंथकार उठाता है और वही पूछता है कि अगर ऐसा है तो अंत में अगर तुम कछुए में आकर के रुक जाते हो तो बताओ कि कछुआ कहाँ टिका हुआ है। अब उस कछुए के नीचे अगर कुछ है तो बताओ वो कहाँ टिका हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो इसको तो तुमको समाधान ढूंढना पड़ेगा, है ना? तो मेरा ये दिखाने का उद्देश्य ये था, क्या ये साइंटिफिक टेम्पर के अंतर्गत नहीं आएगा? आप इसका निष्कर्ष खुद निकाल लीजिए। बट आपसे मेरा अभी एक सवाल ये है कि आप बता सकते हैं कि इस ग्रंथ की काल गणना कब हुई होगी, तो किस वर्ष में ये ग्रंथ लिखा गया होगा? अगर वर्ष भी नहीं तो दशक भी नहीं तो कम से कम किस सेंचुरी में ये लिखा गया होगा, इसका ही कम से कम अनुमान लगाइए। ईसा के बाद ही डेफिनेटली लिखा गया है। ये कश्मीर के एक आचार्य थे लल्ल, बहुत ही बड़े खगोल शास्त्री थे, उनके द्वारा ये 8वीं शताब्दी में लिखा गया हुआ है। मतलब गलीलियो के परदादा भी तब नहीं रहे होंगे। तो क्या ये साइंटिफिक टेम्पर के अंतर्गत नहीं आएगा? ये तो एक उदाहरण था। इसी के प्रारूप बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, बट मैं इस साइंटिफिक टेम्पर में यहीं तक अपना बात को रखते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा। और इसमें एनईपी का उल्लेख था, तो एक और अभी इसी संदर्भ में प्रश्न है। जो चित्र आप देख रहे हैं, एक रानी की वाव है, जो पाटन नामक शहर आज भी बहुत ही विश्व स्तर पर पर्यटक दृष्टिकोण से बहुत मशहूर है ये। और ये जहाँ मेरा नेटिव स्टेट है तमिलनाडु, वहाँ का तिरुचिरापल्ली का एक माफ कीजिएगा,
यहाँ पे आ रहा था, ये एक बांध का निर्माण हुआ था आज से 2000 साल पहले। प्रश्न ये है कि उस समय पानी का इतना आभास तो नहीं रहा होगा, बट फिर भी लोगों को एक तरह से भविष्य के बारे में चिंता थी, जिसके कारण वो इस तरह के वाटर कंजर्वेटिव मेथड्स को अपनाए और उसका वो अभी तक आज तक वो जीवित है। तो क्या आज हम 21st सेंचुरी में ऐसे किसी टेक्नोलॉजी का हम कल्पना करने की क्षमता रखते हैं जो आज से कम 1000 साल बाद का जो प्रॉब्लम आएगा उसको हम सॉल्व कर सकें? आप इसका आंकलन खुद कीजिएगा। तो क्या व्हाट हैज बीन द एडवांटेज ऑफ दिस मॉडर्न सो कॉल्ड मॉडर्न वेस्टर्न रैशनल साइंटिफिक टेम्पर्ड एजुकेशन that is not even allowing us to think or cognize a problem which can come 1000 years later? उसके समाधान तो दूर की बात है, आज से हजार वर्ष के बाद किस तरह की प्रॉब्लम्स, किस तरह के समस्याओं का हमें समाधान ढूंढना होगा, इसका हम परिकल्पना भी नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ हमारे आंखों के सामने दो ऐसे उदाहरण हैं जो आज से लगभग, एक तो ये तो 1000 साल पहले बना था और ये 2000 साल पहले बना है और आज भी ये कार्यरत है। ऐसा नहीं कि ये केवल संग्रहालय में रखने लायक कुछ वस्तु है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जिन विषयों से हमें वंचित रखा गया उसको हमें पुनः कम से कम, अभी जो सिंहावलोकन बोलते हैं, जब शेर आगे बढ़ता है तो कभी कभी पीछे मुड़ कर ये देखता है कि भैया हमारे पीछे क्या था। तो अभी अब सौभाग्यपूर्ण या दुर्भाग्यपूर्ण आज़ादी के 75 वर्षों के बाद हमारे पास एक ऐसा अवसर मिला है, सिंहावलोकन का अवसर मिला है, जिससे हम अपने अतीत में जो हमारा धरोहर है, जो हमारे वैज्ञानिक और तकनीकी कुशलताओं का एक प्रतीक है, उसको हम देखें, जाने, समझें और उससे हम कुछ सीख लें। अब जब हम अतीत को देखते हैं तो प्रायः 3 दृष्टिकोणों से उसको देखा जा सकता है। एक ऐतिहासिक रूप से, दूसरा साहित्य के माध्यम से, तीसरा कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो एक एग्जाम्पल्स के रूप में, और अभी तक मैं केमिस्ट्री पे नहीं आया हूँ, हालांकि मैं बोलने वाला हूँ केमिस्ट्री पे ही केवल। बट और एक और जो बहुत ही विवादास्पद विषय भी है, और यद्यपि उत्तर भारत में उतनी विवादास्पद नहीं है जितनी जिस भूखंड से मैं आता हूँ, वो है भाषा। भारतीय ज्ञान जो है वो इतनी सारी भाषाओं, भारत तो भाषाओं का एक बहुत बाहुल्य प्रदेश है, पर उसके पश्चात भी जो ज्ञान की बातें थी उनका जब एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन हुआ तो लिंगुआ फ्रैंका ऑफ द इंटेलेक्चुअल सोसाइटी वाज, बिलीव इट और नॉट, संस्कृत। अब उसी संस्कृत के बारे में मैं एक वक्तव्य आपको दिखा रहा हूँ, और अगेन जिन लोगों पे निद्रा देवी हावी हो रही हैं उनको संकेत करते हुए आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा कि ये किसके द्वारा बोला गया शब्द है। I would personally like as many Indians as possible. I see no difficulty about where is it. If we ask the more languages, I would personally like as many Indians as possible to know Sanskrit. Okay? What is the finest heritage? I would answer unhesitatingly, it is the Sanskrit language and literature and all that it contains. थोड़ा दिमाग लड़ाइए, बताइए किसका ये वक्तव्य रहा होगा। हाँ, बहुत सही, ये नेहरू का ही वक्तव्य है, अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं, और ये संस्कृत के बारे में ये इनका दृष्टिकोण था, क्योंकि ये मेरे कपोल कल्पित बातें नहीं है, अथवा जिन तथाकथित बुद्धिजीवी का मैं अनुयायी हूँ उनका भी बात नहीं है। मैं इसको स्किप करता हूँ क्योंकि डायरेक्टली मैं आऊँगा केमिस्ट्री पे। बात हुई थी पिछले इसमें टॉक में भी कॉम्पोजिट नैनो मटेरियल्स, कॉपर एंड जिंक का, तो उसी और थोड़ा टिप्पणी करते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। और मेटल टॉक्सिसिटी पे बहुत विस्तार रूप में चर्चा हुआ था भोजन से पहले, जिसके कई सारे तथ्यों से मेरा व्यक्तिगत रूप से विरोध है, मतभेद है, बट उन मतभेदों को मैं यहाँ पे इससे अपनी व्याख्यान में नहीं लाना चाहता हूँ। इतिहास को अगर हम देखें तो इतिहासकारों ने हमारे मानवीय या फिर जीवन को इस पृथ्वी में कई वर्गों में वर्गीकरण किया है उसका। पाषाण युग,
फिर पाषाण युग के बाद आता है धातु युग। धातु युग में भी सर्वप्रथम आता है कॉपर, देन ब्रॉन्ज, देन आयरन, और इतिहासकार आयरन तक रुक जाते हैं। और वर्तमान काल जो कि 2000 साल कह लीजिए, उसमें अभी वर्तमान में अगर हम सिलिकॉन एज बोलें या प्लास्टिक एज बोलें या गार्बेज बोलें, वो सोशियोलॉजिस्ट के ऊपर है, वो कैसे उसको देखते हैं। मेटल्स आर इंडीड एन इनएविटेबल पार्ट, उसके बिना हम अपने जीवन का कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। तो द टॉक्सिसिटी एसोसिएटेड विद मेटल इज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। मेटल्स जब हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं तो ऑलवेज वी रेफर टू मेटल्स व्हेन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, और जैसे ही मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 या किसी N+ में चला जाता है तो दे बिकम मिनरल, दे आर नो लॉन्गर मेटल। तो द टॉक्सिसिटी दैट इज एसोसिएटेड विद द मेटल और इट्स मिनरल फॉर्म, ये प्रायः जो है लिटरेचर में लोग इसको एम्बिगुअसली लिखते हैं इसको, जिसके कारण स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है। जो कि आज के वक्तव्य में भी था कि द स्पीकर डिड नॉट डिफरेंशिएट वेदर दिस इज द मेटल और द मिनरल फॉर्म ऑफ दैट इज व्हिच इज टॉक्सिक। एक्चुअली जो मर्क्यूरी का पॉइजनिंग था वो मीनामाटा डिजीज जापान से शुरू होता है 1960s में, कि वहाँ की मछलियों के इतने सारे ड्रग्स मर्क्यूरी खा लिए थे, फिर उन मछलियों को खा करके जो जापानीज को प्रॉब्लम हुआ, वो एक्चुअली मर्क्यूरी वॉज इन द एलिमेंटल फॉर्म, मर्क्यूरी 0 फॉर्म, ओके। बट द सेम मर्क्यूरी, if you have it in the plus form, because mercury exists in both +1 and +2 state, mercurous and mercuric। और हमारे यहाँ पे जो है, अगर आप आयुर्वेद का ही ले लें या फिर अथवा जो भी जो औषधि विज्ञान हमारे यहाँ पे हुआ प्रचलन में था, अभी भी है, तो 50% से ज़्यादा आपको ऐसे औषधि मिल जाएंगे जहाँ पे धातुओं का प्रयोग होता है, मुख्य रूप से मर्क्यूरी का प्रयोग होता है। उस मामले में मैं स्वयं एक उदाहरण हूँ, क्योंकि कोविड आया था, मेरे को 1 सप्ताह का 104 बुखार था और मैंने मर्क्यूरी का ड्रग खाया है और मैं जीवित हूँ बिना किसी साइड इफेक्ट, एक पैरास्टामोल भी लेना नहीं पड़ा। एक ब्रशिंग विद एवरीथिंग विद वन स्ट्रोक की मर्क्यूरी इज पॉइजनस, इट्स नॉट साइंटिफिक एट ऑल। तो उसमें क्या कौन सा फॉर्म पॉइजनस है, वो फिर कैसे उसको कॉम्प्लेक्सेशन में आता है, कैसे उसके रिएक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं, दीज आर मैटर ऑफ फाइनर डिटेल्स। तो धातु के जब संदर्भ में आते हैं तो सर्वप्रथम धातु जो सभी सभ्यताओं ने उसको लेकर के काम किया, उसको आजमाया, वो था सोना। बोथ इंडिया एज वेल एज मिस्र हो या फिर यूनान हो या किसी भी सभ्यता को ले, सबसे पहला धातु था गोल्ड। गोल्ड ऑल ऑफ अस नो फ्रॉम केमिस्ट्री कि वो जनरली 0 फॉर्म में पाया जाता है और कभी कभी +1 फॉर्म में भी पाया जाता है, हम उसको देखते हैं प्रकृति में। तो जो 0 फॉर्म में है उसको तो केवल प्रोसेस करना है मैकेनिकली, और जो प्लस फॉर्म में है उसको रिड्यूस करना है। रिडक्शन मतलब वी नीड टू सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स, और आइदर सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म, सॉलिड स्टेट रिएक्शन में या लिक्विड स्टेट रिएक्शन में। तो ये सब हम पहले फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हमें कहाँ से मिलता है, एक ग्रंथ है, अगेन आई विल टेक इट एज अ क्विज। इस ग्रंथ में हमें 16 डिफरेंट प्रकार के सोने को बनाने का विधि बताते हैं। आज भी मार्केट में जो है 18 कैरेट गोल्ड है, 16 कैरेट गोल्ड है, 22 है, 24 है, और 22 कैरेट इज वर्ड्स कॉमनली यूज, जिसके साथ 91.6% ऑफ गोल्ड रहता है उसमें। तो अगर 16 प्रकार के गोल्ड बनते हैं तो मतलब कुछ एक इंफीरियर क्वालिटी होगा, कुछ एक सुपीरियर क्वालिटी का होगा। अब अगर कोई इंफीरियर क्वालिटी का बना रहा है और उसको सुपीरियर क्वालिटी के दाम से बेच रहा है, तो उसको तो पहले समाज उसको पकड़े, यानी कि वो चोरी कर रहा है। तो यहाँ पे इस ग्रंथ में वो भी मेथड बताया गया है कि हम कैसे डिटेक्ट करें गोल्ड के क्या क्वालिटीज़ हैं, और ये टेक्नोलॉजी आज से लगातार 2000 साल तक अनवरत चलता आ रहा है। और ये टेक्नोलॉजी आप उससे भली भांति परिचित हैं, तो कसौटी में रगड़ के फिर कुछ उसमें डाल करके परीक्षा करना। अब अगेन अ क्विज क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स, बताइए किस ग्रंथ का मैं उल्लेख कर रहा हूँ। आप समझ में आ रही ना जो मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक ग्रंथ का उदाहरण दिया जहाँ पे विभिन्न प्रकारों को सोने को बनाने का बताया गया है। प्रश्न ये है कि किस ग्रंथ का मैं उल्लेख कर रहा हूँ। कुछ अटेम्प्ट कीजिए, आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। नहीं, अथर्ववेद एक अच्छा गेस था। हाँ,
शुल्ब सूत्र नहीं, वो भी नहीं, ऋग्वेद नहीं, और दो बचे हैं, बता दीजिए वो भी। यजुर्वेद और सामवेद वो भी नहीं, उपनिषद नहीं, ब्राह्मण अरण्यक नहीं, हाँ, चरक संहिता का अभी आए संहिता वाले काल में, ठीक है। रस रत्नाकर तो बहुत आगे चले गए आप। ये वास्तव में मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको अनुमान नहीं आप अनुमान नहीं लगा पाएंगे किस ग्रंथ की मैं बात कर रहा हूँ। ये अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र से आप लोग सब लोग परिचित हैं, बट उसकी खासियत ये है कि वो मेटल्स एंड मिनरल्स के बारे में पूरा एक अध्याय लिखता है कौटिल्य अपने द्वितीय अध्याय में, बिकॉज दीज आर ऑल डायरेक्टली कनेक्टेड विद द स्टेट प्रेशर। और अगर स्टेट का जो ट्रेजरर जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा इंफीरियर गोल्ड को सुपीरियर गोल्ड से, तब तो स्टेट को डूब गया। और कोई भी आकर के उसके कोषागार में कुछ इंफीरियर धातु दे दे, वो तो स्टेट तो फिर डूब गया ना। तो ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र है, जो पहला डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है आज से कम 2200 साल 2300 साल पहले से, जहाँ हमें बहुत सटीक इन्फॉर्मेशन मिलते हैं कि कैसे हम ना ही केवल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, लेड एंड टिन, इन 6 धातुओं के बारे में कैसे उसको प्योरीफाई किया जाए, कैसे उसको प्रोसेस किया जाए, कैसे इनके मिश्र धातु बनाए जाए, इन सब का बहुत ही विस्तृत रूप में हमें देखने को मिलता है। जैसे ये एक सॉलिड स्टेट रिएक्शन का एक्सप्लेनेशन है, तो मैं इसमें क्योंकि भाषा की बात मैंने किया था, ये भी सौभाग्य से इस अर्थशास्त्र का ग्रंथ का जो पहला हिंदी में अनुवाद हुआ था वो BHU से ही हुआ था। बट इसमें भी देखिए, एक तो प्राचीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भाषा एक अड़चन है। अब उस भाषा को भी जब हम अनुवाद करने बैठते हैं तो अनुवाद भी अगर अड़चन बन जाए तो फिर तो कोई तो इसको देखने से ही रहा है। जैसे यहाँ पे एक शब्द आता है सीसा, सीसा एक्चुअली इज लेड। अब हिंदी में जब ये अनुवाद हुआ तो ये जस्ता में आया, बदल गया। जस्ता इज एक्चुअली जिंक। अभी भी यहाँ पे बोलचाल में जस्ता जिंक को बोलते हैं। सीसा मेरे ख्याल से अभी हिंदी में ये वांग्मय से चला गया है, क्योंकि लेड को लोग लेड ही बोलते हैं हिंदी में। और आप लोग कुछ उसका दूसरा कुछ संबोधन है तो बताइए। सीसा ही बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, मतलब थोड़े आधुनिक वर्ग में, आधुनिक काल में, एडीज में आयरन का तो ये इस पेपर से, जो नियोगी का पेपर था आज से 100 साल पहले वाला, उसमें उन्होंने जितने भी उत्खनन से पाए गए लौह धातु के बारे में उन्होंने उल्लेख किया था, उन उत्खनन अवशेष जिन जगहों में हमें मिले। अब ये रोमांचक वाली बात है कि ये सारे उत्खनन के अवशेष जो हैं, इनमें एक सामान्यता है, एक यूनिफॉर्मिटी है फ्रॉम मेटलर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो रस्ट नहीं होते हैं, दूसरे इनके जो कॉम्पोजिशंस हैं वो मोर और लेस सिमिलर है। तो इससे हमें यही पता चलता है कि आयरन को प्रोसेस करने वाला जो टेक्नोलॉजी था वो एक पैन इंडिक टेक्नोलॉजी था। इट वॉज वेल ऑप्टिमाइज्ड टेक्नोलॉजी। उसका उदाहरण तो हमें भी ये दिल्ली का लौह स्तंभ जिसको हम मानते हैं, वास्तव में ये दिल्ली में नहीं था। आज ये दिल्ली का एक बहुत ही एक अच्छा लैंडमार्क बन गया है, मेहरौली में है, कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में है। बट ये आज से लगभग, जब ये बना था 1500 साल पहले, प्लस और माइनस 100 ईयर्स, बुंदेलखंड के इलाके में एक विष्णुपादगिरी नामक एक जगह था, जहाँ पे एक बहुत ही भव्य विष्णु जी का मंदिर था, उसका ध्वज स्तंभ था ये। अब जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया तो उसने इसको वहाँ से उस ध्वज स्तंभ को निकाला और मेहरौली ले गया। फिर उसके बाद का जो वंशज आया इल्तुमिश, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से कुतुब मीनार बनाया। अब उस कुतुब मीनार के प्रांगण में ये लौह स्तंभ स्थित है। इसका खासियत तो आपको सभी को मालूम है कि ये रस्ट नहीं होता है, बट ये अपने में एकमात्र एक अपवाद नहीं है। जैसे मैंने पहले चित्र में दिखाया था, भारत के कहीं से भी हमें जो उत्खनन के अवशेष मिले हैं लोहे के, उन सब में कोई जंग अभी तक उसमें नहीं पकड़ा है। इसी तरह के 3 गुना ज्यादा जो बड़ा स्तंभ है वो मध्य प्रदेश के धार इलाके में है अभी भी, लेकिन वो खंडित रूप में है। और पूर्वी दिशा में अगर आप जाएंगे तो कोणार्क का जो सन टेम्पल है, वहाँ पे भी हमें बहुत ही भारी मात्रा में रस्टलेस आयरन को हमें देखने को मिलेगी। और ये है बहुत ही विश्वविख्यात दमिश्क का तलवार, दमास्कस सोर्ड, दमिश्क का तलवार।
दमिश्क एक्चुअली किसी व्यक्ति का नाम नहीं था। ये सीरिया के जगह में, सीरिया के जो कंट्री था उसका एक जगह का नाम है। और जिस स्टील से ये बना था उसका नाम था वुड्स स्टील। वुड्स भी किसी WOOTZ, वुड्स स्टील, ये भी किसी व्यक्ति का नाम नहीं था। 5 मिनट। वुड्स स्टील की एक ये खासियत थी कि तलवार जनरली कहाँ यूज होती है? किचन में सब्जी काटने के लिए तो नहीं होती है, जंग में, और वो भी डराने के लिए नहीं, सर काटने के लिए होती है। मतलब ये ऐसा उपयोग में आना चाहिए कि मेरे जैसा योद्धा अगर उसको उठाते उठाते ही गिर गया तो मतलब वो जंग जीतने से रहा। तो मतलब कैरी करने में लाइट वेट होना चाहिए। और पता चला एक सर काटा, उसके बाद उसको घिसना पड़ा, फिर से धार करना पड़ा। तो इट शुड बी बोथ रोबस्ट एंड इट शुड बी सर्वाइविंग, द शार्पनेस शुड सर्वाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो प्रॉपर्टी इस वुड स्टील में मिलता था, जो कि ये भारत से स्लेव्स बना करके लेकर के गए थे दमिश्क। और ये वुड जो है मेरे मातृभाषा तमिल से आता है, जिसका अर्थ है पिघला हुआ। उर्ग नाम है, उसका अर्थ है एक्चुअली पिघला हुआ। तो ये, बट इन सब के कहने का पीछे मेरा तात्पर्य बिल्कुल ये नहीं है कि जो हमारे जो पूर्वज जैसे बनाए थे उनको ये फेस डायग्राम का नॉलेज था। ये कतई में मेरा दावा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही आधुनिक भाषा है। वरना कल को पता चला कि ये पत्रकार वालों ने निकाल दिया कि फेस डायग्राम का उद्घाटन और प्राचीन भारत में वैदिक काल में हो गया था। ये नहीं है। जहां तक बात स्टील की आती है, तो अगर आप नीचे, अगर आप यहाँ पे ध्यान केंद्रित करेंगे, द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज वेरी वेरी नैरो विंडो। मतलब 0.2 से लेकर के 2% तक का ही कार्बन अगर उसमें हो तो वो उस तरह का क्वालिटी का स्टील बन सकता है। वरना उससे कम हुआ तो रॉट आयरन, उससे ज्यादा हो तो कैस्ट आयरन बन जाएगा। तो ये कंट्रोलिंग द कार्बन परसेंटेज वाज रियली ए क्रूशियल टास्क, जो सेरेंडिपिटसली ऑप्टिमाइज हो गया था। और इस तकनीकी को अपनाते हुए हमारे पूर्वजों ने बहुत सारी आकृतियों को बनाया। इस चित्र को मैं, ये रांची में अभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो ऑफिस है, उनके ऑफिस में ये टंगा हुआ चित्र है। ये अगेन दिस इज, ये कोई फोटोग्राफ नहीं है, किसी चित्रकार का एक काल्पनिक छवि है ये। इसमें ये अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर, और ये राजा पुरु। और इतिहास में मत अलग है कि पुरु हार गया था, फिर उसने याचना किया अलेक्जेंडर से कि इत्यादि। उस विवाद पे मैं नहीं जाना चाहूँगा, बट ये था कि जंग एक तरह से नहीं हुआ और अलेक्जेंडर को वापस जाना था। और आज सुबह भी आपने सुना था कि एक काराकोरम रेंज में जब अलेक्जेंडर वापस जा रहा था तो उनके और जो पाकिस्तान के पंजाब के वंशज हैं उनमें बहुत सारा एक जेनेटिक प्रोक्लिविटी है उसमें। खैर, तो ये पुरु जो था अलेक्जेंडर को ये दमिश्क तलवार भेंट के रूप में दे रहा है। वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आकर्षक नहीं है। पीछे इसका सेवक खड़ा है और उसके हाथ में एक सोने की पेटी है, सोने की पेटी है। और सोने की पेटी के अंदर क्या है? एक स्टील का ब्रिक, ब्रिक ऑफ स्टील। तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय सोने से ज्यादा स्टील का, इस्पात का महत्व था। इसको सोने के पेटी के अंदर में रख करके अलेक्जेंडर को दिया जाता है। देने का एक हमें यहाँ पे एक प्रमाण मिलता है। अभी फास्ट फॉरवर्ड कीजिए वर्तमान काल में। आज अगर हम घर में एक छोटा सा भी गोल्ड के आभूषण खरीद लें, चाहे वो कान का हो या नाक का हो, तो तुरंत जाएंगे बैंक के लॉकर में जाकर के रखेंगे। और इसका विपरीत दृश्य देखिए जो यहाँ पे इस समय में। कॉपर, कॉपर की आकृतियां तो ब्रॉन्ज तो हड़प्पन काल से हमें देखने को मिलता है। ब्रॉन्ज इज नथिंग बट कॉपर विथ टिन। कॉपर को अगर टिन के साथ मिश्र धातु बनाएंगे तो वो काम से बनता है, और वही ताम्र को जस्ते के साथ मिला करके मिश्र धातु बनाते हैं तो वो पीतल बनता है। यहाँ से बहुत ही निकट मुरादाबाद, जो कि पीतल नगरी भी कही जाती है, तो वहाँ पे आपको पीतल के बहुत बनाने की विधियाँ देखने को मिलेगी। ब्रॉन्ज क्वाइट, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। जिंक, जस्ता, जस्ता जो भी शब्द है बोलचाल में कैसे है, यशद से बना जस्ता।
यशद कैसे बना? यशम ददाति इति यशद, क्योंकि ये यश यश मतलब दैट विच हैज गॉट सम स्प्लेंडर, जो चमकता है, और यहाँ पे ये चांदी का इसमें पर्याय है, क्योंकि चांदी जैसा दिखता है तो इसलिए जिंक को भी चांदी सा बता दिया गया है, तो ये इसको जस्ता या यशद बोलते हैं। और तुर्कीय भाषा में इसको तूतिया, तूतिया और उसके, और ये तूतिया शब्द भी जो है अगर देखेंगे तो संस्कृत के तुच्छ से निकला हुआ शब्द है। इसके हमें जो साहित्य के माध्यम से प्रमाण है बहुत मिलते हैं, मैं इसके डिटेल में नहीं बताऊंगा। बट जो पते की बात है, जिंक की मेटलर्जी, जिंक इस बहुत ही डेलिकेट मेटल है। जैसे ही उसको प्रोसेस करके जिंक, जैसे ये इस फॉर्म में आया, फॉर इंस्टेंस ये जिंक इस फॉर्म में आए तो लिक्विड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में है, हीट करके लिक्विड में आया, लिक्विड में आते ही ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यू कैनॉट हैव इट इन दी ओपन फर्नेस, इसके लिए क्लोज फर्नेस की आवश्यकता है। तो ये था उसका क्लोज फर्नेस, जहाँ पे नीचे में एक एम्प्टी खाली घड़ा रख दिया जाता था, ऊपर से घड़े को उल्टा करके उसके अंदर जो भी कार्बन के सोर्स थे और जो भी जिंक का ओर था उसको रख के ऊपर से आग दे दिया जाता था, हीट ट्रीटमेंट, और उस रिएक्शन के माध्यम से जिंक इसके कहीं ना होते हुए नीचे आता था और नीचे से इसको जिंक को प्राप्त करते थे। जिंक के हमें बहुत सारे, अगेन एक गोरे ने थापा दे दिया है और इस गोरे को पद्मश्री भी मिला हुआ है, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। उसका क्या कहना है कि नाउ दिस इज अर्लीस्ट डेटेड जिंक माइंस इन द वर्ल्ड एंड अर्लीस्ट नोन सेंटर फॉर जिंक प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो इस बात से हम भली भांति गर्व अनुभव कर सकते हैं कि पूरे विश्व को जस्ते का जो निर्यात था वो भारत से ही हुआ। ग्रंथों में हमें बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं। अभी भी जो केमिस्ट्री में बहुत सारे अपैरेटस का जो विवरण हमें देखने को मिलता है, उन सब का पूर्व प्रारूप रसार्णव और रसरत्न समुच्चय नामक ग्रंथ से मिलता है, जहाँ पे वो शीशे से नहीं बने होते हैं, ग्लास से नहीं बने होते हैं, बट ये मिट्टी से बने होते हैं। तो इतना ही अंतर है, बट फंक्शन में वो एग्जैक्टली सेम टाइप के हैं। तो आज भी ये प्रचलन में है। ये कन्नौज का चित्र है। ये अगेन क्विज टाइम, जो स्टूडेंट्स हैं, ये कुछ संस्कृत में लिखा गया है, उस पर आप ध्यान में दीजिए कि क्या एग्जैक्टली लिखा गया है, बट ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है। थोड़ा आप गेस कीजिए कि ये किसकी और ग्रंथकार संकेत कर रहा है। आवर्तमाने कनके पीता तारे सिता प्रभा शुल्बे नील निभा कृष्णे तीक्ष्ण वर्णा सुरेश्वरी इत्यादि। वास्तव में ये जो हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं ना लैब में, कैटायंस के सॉल्ट एनालिसिस, फ्लेम टेस्ट, अगर कॉपर को इंट्रोड्यूस करो तो फ्लेम में ये कलर चेंज होगा, ये फ्लेम टेस्ट का सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन रसार्णव नामक ग्रंथ से आता है। और हमारी दुर्भाग्य ये है कि रसार्णव ग्रंथ का सटीक काल गणना अभी तक नहीं हुई। शुल्ब से एक बात, ये शुल्ब जो है कॉपर का पर्याय है, और पते की बात इसमें यह भी है कि जो शब्द सल्फर हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में आज भी, वो संस्कृत वांग्मय से गया है। शुल्वरी, सल्फर का संस्कृत नाम है, गंधक है, गंधक के साथ साथ शुल्वरी भी है, जो शुल्ब का दुश्मन है। शुल्ब यानी कॉपर, शुल्ब से अरी इति शुल्वारी, शुल्वारी से बना सल्फर, क्योंकि सल्फर एक तरह से यूनिट ऑफ मेजरिंग द रिएक्शन था हमारे पूर्वजों के लिए। वो देखते थे कि कौन सा मेटल सबसे ज्यादा सल्फर से कैसे रिएक्ट करता है, उस माध्यम से उन्होंने एक तरह से एक क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी किया। सुवर्णम रजतम ताम्रम, गोल्ड सिल्वर कॉपर, तीक्ष्णम आयरन, भंगम टिन, भुजंगम लेड, लोहन तो षड्विधम तच्च यथा पूर्वम तद अक्षयम। They have arranged these metals in the order of reactivity, and that unit of reactivity was sulfur. So concept based examples में जो आज मेटल्स की टॉक्सिसिटी की बात आ रही है, उसी पे मेरा भी खुद का एक रिसर्च काम था। आयरन के आयुर्वेद में मंडूर भस्म है, और वही सिद्धा लिटरेचर में इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। उस पर एक पीएचडी स्टूडेंट ने काम किया था। तो हमने हर स्टेप्स को साइंटिफिकली कैरेक्टराइज करने का प्रयास किया, देखा कि जो फर्नेस का डिस्क्रिप्शन है उसमें कितना टेम्परेचर जाता है,
और जितने भी कैरेक्टराइजेशन पॉसिबल है उसमें हमने करके देखा। तो हमारा समरी ये था, ये जो ड्रग्स के नाम है, आप नाम पे मत जाइए, दे आर कंपोज्ड ऑफ पॉलीसिलिकेट कोटेड आयरन ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स। एंड ये पॉलीसिलिकेट कोटिंग जो था और जितने भी वहाँ पे भेषज वस्तुओं का वहाँ पे उपस्थिति थी, उसका योगदान ये था कि जो फेस ट्रांसफॉर्मेशन सिलिका में 1500 डिग्री सेल्सियस में होता है, वो उसका काइनेटिक्स बदल के 900 डिग्री सेल्सियस में हो रहा है। तो कंक्लूजन में मैं इतना ही कहूँगा कि कंक्लूजन से पहले जो सीवी रामन के साथ जो एक वारदात घटी, क्योंकि मेरा मेन एरिया रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी से है, तो मैं रामन मेरे एक तरह से श्रेष्ठ वैज्ञानिक और मनीषी के रूप में मैं उनको देखता हूँ, बट उनसे भी कई त्रुटियां हुई। एक त्रुटि को एग्जाम्पल लेते हुए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। उनको रदरफोर्ड ने इनवाइट किया था कैम्ब्रिज में, और रामन गए, कैम्ब्रिज का भ्रमण किया, और एक दिन बहुत निराशापूर्वक आए रदरफोर्ड से बोले कि कैम्ब्रिज एक सीरियस अध्ययन करने का कोई एरिया मुझे लगता नहीं। उनके शब्दों में, इट सीम्स टू मी कैम्ब्रिज इज अ प्लेस फॉर प्ले एंड नॉट फॉर स्टडी। ऐसे उनके दिमाग में क्यों आया? क्योंकि जब वो भ्रमण कर रहे थे तो देखा कि कुछ बच्चे गा रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं, कुछ ड्रामा कर रहे हैं, कुछ कारपेंट्री का काम कर रहे हैं, कुछ ब्लैकस्मिथ का आयरन मेटलर्जी का काम कर रहे हैं। पढ़ाई को, उनके हिसाब से पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब कुछ कर रहे हैं। पलट के रदरफोर्ड ने क्या जवाब दिया, उसी में आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, वी डू नॉट ट्राई टू ग्रो बुकवर्म्स हियर, वी ट्रेन मेन हु कैन गवर्न एन एम्पायर। किताबी कीड़ों को मात्र उत्पन्न करने के लिए हमारा ये संस्थान नहीं बना हुआ। इसी परिप्रेक्ष्य से हमारे भारत में पिछले 200 सालों से जितने भी विद्या के संस्थान बने हैं, आपका जो ये कॉलेज भी है जिस उद्देश्य से बना है, वो ये है कि हम पाश्चात्य और जो नूतन ज्ञान है उसको तो हम ग्रहण करें, बट साथ साथ हमारे धरोहर में जो है उसका भी हम एक तरह से पहचान करें, और मात्र किताबी कीड़ा बनकर के ना रह करके पूरे विश्व को एक विशाल दृष्टि से देख करके अपने आप को सफलता की ओर आगे लेकर के जाए। तो इसी इन शब्दों से मैं आयोजकर्ताओं को पुनः धन्यवाद देते हुए मैं वाणी को यही विराम देना चाहता धन्यवाद प्रोफेसर वी रामनाथन जी। आप में से किसी को कोई जिज्ञासा हो तो सर से पूछ सकता। मुझे लग रहा है कि सब लोग काफी थक गए हैं और किसी की कोई जिज्ञासा नहीं रह गई है। हाँ ठीक है, तो आप पूछिए सर। एक जिज्ञासा है इनकी, आपसे पूछना चाहता हूं। उत्तर का मैं दावा नहीं देता हूँ, अगर कुछ स्वागत है। सर जैसे आपने लौह स्तंभ, जो महरालू का लौह स्तंभ है, उसके बारे में आपने बताया कि जो है जो किसी मंदिर में स्थापित था। तो जैसे मुझे लगता, मैंने अभी तक जहाँ तक पढ़ा है, स्टडी किया है एनसीईआरटी में बहुत सारी जगह, तो मुझे लगता है जो लोहे के जो स्तंभ बनाने का जो कार्य जो सम्राट अशोक ने के समय से हुआ है, और जहाँ भी लोहे के स्तंभ की बात आती है वहाँ सम्राट अशोक का नाम आता है। और जो महरालू का लौह स्तंभ है उसको मैंने पढ़ा है, तो सम्राट अशोक ने अपने दादा जो चंद्रगुप्त मौर्य की याद में बनवाया था। ऐसा कई जगह हमें पढ़ने को मिला है, विद्वानों का भी मत है। कैसे आप बता रहे हैं? ये अच्छा प्रश्न है। सम्राट अशोक के संदर्भ में भले ही कुछ लौह स्तंभ का उल्लेख आया हो, इस लौह स्तंभ के बारे में मेरा सौभाग्य था कि जो आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर आर बालासुब्रमण्यम थे, उन्होंने इस पे बहुत जितना अध्ययन उन्होंने किया है उसके समान किसी और ने नहीं किया है। उन्होंने जो ये ब्राह्मी लिपि में ऊपर में लिखा हुआ है उसका भाषा शास्त्रियों के साथ बैठ करके उसका भी डिकोड किया है, तो प्रत्यक्ष रूप से अशोक का उल्लेख इस स्तंभ में नहीं आता है। और ये बात सच है कि जो अन्य उनकी प्रशस्ति स्तंभ कहिए या प्रशस्ति शिला कहिए, उनमें कहीं न कहीं कहीं लौह का उल्लेख आता है। बट एक जो आपने वाक्य कहा कि लौह स्तंभ, लौह धातु वाली जो बात अशोक सम्राट के
काल से बनना शुरू होता है, इसमें मेरा थोड़ा मतभेद है, क्योंकि हमें प्रमाण इसका अथर्ववेद काल से मिलता है। अथर्ववेद काल के बाद अर्थशास्त्र में भी मिलता है, बहुत ही सटीक रूप में लोहे को प्रोसेस करने का। तो इसको लोहे का प्रोसेसिंग अशोक के समय में भी हुआ, बट अशोक के काल से ही प्रारंभ हुआ, ये कहना ऐतिहासिक रूप से, तथ्यात्मक रूप में गलत है। सर जैसे मैं ये नहीं कर रहा कि लोहे का प्रयोग या उसका जो अशोक काल, लोहे का प्रयोग तो बहुत पहले से हुआ है, ईसा पूर्व 1000 ईसा पूर्व का हुआ। लेकिन जो है जो स्तंभ बनाने की प्रक्रिया जो डायरेक्ट जो था उससे प्रभावित होकर क्या कहते हैं अशोक ने स्टार्ट किया। अगर कहीं और होता तो जरूर कहीं ना कहीं इसका जिक्र मिलता, दो चार और कहीं पाए जाते हैं। तो मुझे जैसे लगता है कर्नाटका में कोडाचाद्री पिलर है, मैंने अपने व्याख्यान में बताया भी था। धार में धार पिलर्स हैं, और कोणार्क के पिलर्स इसके बाद आते हैं। हाँ, कैनन्स, बट कैनन्स बहुत बाद में आते हैं, बारूद वगैरह बहुत बाद में आते हैं। सबसे पहले वो लौह स्तंभ। ठीक, थैंक यू सर। एक अच्छा अध्येता, अच्छा स्कॉलर ऐसे प्रश्नों की खोज नहीं करता है जिनका वो उत्तर दे सके, वो ऐसे प्रश्नों की प्रतीक्षा करता है जिनका उत्तर वो न दे सके, क्योंकि वो उसके अध्ययन को और अधिक प्रमाणित करेंगे और एक नए रास्ते देंगे। और सर ने अपनी बात से इस बात का पहले ही संकेत दे दिया। सर को एक बार बहुत बहुत महाविद्यालय परिवार की ओर से और आप लोगों की तरफ से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामनाथन सर। इस कॉन्फ्रेंस की अगली टॉक जो है वो डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्रा की है। डॉक्टर मिश्रा रेडियो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं। आपकी पीएचडी आईआईटी कानपुर से है 2011 में, और पोस्ट डॉक है नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी यूएसए से, और 44 से अधिक पब्लिकेशंस आपके इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हैं। वर्तमान समय में ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हैदराबाद में, आईआईटी हैदराबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। एंड ही इज गोइंग टू टॉक अबाउट biomimetic synthetic flavin analog displaying nano-oxygenase like catalytic activity. Over to you, Ashutosh Mishra sir. Thank you. Just give me 1 second. I'm trying to connect this. Honey, I'm trying to present my slides actually. मेरी स्लाइड आप देख सकते हैं क्या आप लोग? ओके, तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी देयर. आई बिलीव आई एम स्टिल ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, राइट? मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी का, स्पेशली प्रोफेसर सुनील मिश्रा और डॉक्टर जितेंद्र भट्ट का, उन्होंने एक इन्विटेशन दिया और मुझे एक मौका दिया कि मैं आप लोगों से रूबरू हो सकूँ यहाँ पे। और डायरेक्टली कमिंग टू माय टॉपिक, जहाँ पे बायोमिमेटिक सिंथेटिक फ्लेविन एनालॉग्स पे हम काम करते हैं। और बायोमिमेटिक मीन्स द नेचुरल सिस्टम। हम
ट्राई करते हैं कि नेचर से एक इंस्पिरेशन लेकर के हम उसको कैसे एक सिंथेटिक वे में एक केमिस्ट के रूप में उसको कैसे देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानेंगे और सहमत होंगे, स्पेशली जो यंग माइंड्स हैं, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने अपने प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है और मैं कोशिश करूंगा कि जो की पॉइंट्स हैं मैं उसको डिस्कस करूं और बहुत ही टेक्निकल डिटेल्स में न जाऊं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन मैं आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोस थिंग्स। सो बायो इंस्पिरेशन हमारा हमेशा से एक इंस्पिरेशन रहा है कुछ चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए। और करंटली हम जिस पे काम करते हैं वो एक फ्लेवो प्रोटीन्स है, फ्लेविन बेस्ड सिस्टम्स है। और अगर आप नेचुरल सिस्टम देखेंगे तो ये फ्लेविन बेस्ड प्रोटीन्स नेचुरली बहुत सारे डिफरेंट फिनोमिनाज में ये अपना काम कर रहे हैं। ओके, स्पेसिफिकली अगर मैं आपको दो एग्जांपल दूं जिसमें हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो उनके एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस का है या उनके बायोल्यूमिनेसेंस बिहेवियर का है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो शाइन कर रहा है, जो एक फ्लोरेसेंट, एंड आई थिंक डॉक्टर तौरीक ने अभी मुझसे पहले एक लेक्चर दिया था जहाँ पे वो बायो इमेजिंग और फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे। तो ये एक नेचुरल फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल है जो कि बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी शो करता है। अगर आप केमिकल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑल्दो ये स्ट्रक्चर कई सारे डेरिवेटिव्स हैं फ्लेविन्स के नेचुरल सिस्टम में। राइबोफ्लेविन आप सभी परिचित होंगे, जिसको नॉर्मली हम विटामिन B2 कहते हैं। लेकिन अगर आप फंक्शनल बिहेवियर की बात करेंगे तो मोस्टली ये जो इसका ट्राइसाइक्लिक आइसोएलेक्सिन रिंग है, ये उसका मेन रिस्पॉन्सिबल है इन सारे फंक्शंस के लिए। मेन सारी साइट यहीं पे, सारी रिएक्टिविटी, सारी प्रॉपर्टीज इसी ट्राइसाइक्लिक मॉलिक्यूल से आती है। और बाकी के जो एनालॉग्स हैं, जो ये शुगर फॉस्फेट या एडेनिन का आप ग्रुप देख रहे हैं, वो टेक्निकली बाइंडिंग इंटरेक्शंस के लिए रहता है, जो कि वो प्रोटीन के अंदर कैसे अपने को रीअरेंज करता है। तो लाइक आई सेड कि उसका दो मेन प्रॉपर्टीज हैं, एक फोटोफिजिकल जो कि हाईली ल्यूमिनेसेंट है। अगर हम केमिस्ट्री की टर्म में बात करें, केमिकल स्ट्रक्चर की टर्म में बात करें, तो इसका एब्जॉर्प्शन और फ्लोरेसेंट स्पेक्ट्रा मिलेगा आपको, जो कि काफी इंटेंस होगा। और केमिकल रिएक्टिविटी की टर्म में बात करें तो उसके रिडॉक्स प्रॉपर्टीज हैं। और अगेन एक और खासियत यहाँ पे कि उसके डिफरेंट रिडॉक्स स्टेट में एक डिफरेंट कलर है उसका, एक डिफरेंट स्पेक्ट्रल पैटर्न है उसका। ये सारी चीजें आपको काफी हेल्प कर सकती हैं सिग्नलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस बेसिस पे हमारा ग्रुप जो काम करता है वो मुख्यतः चार डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेके काम कर रहा है। एक मेटल असिस्टेड स्ट्रक्चरल डिजाइन, जिसमें हम मेटल से कनेक्ट करके एक डिफरेंट पर्टिकुलर डिजाइन स्ट्रेटजी हम बना सकते हैं फॉर एप्लीकेशन पर्पस। हम सेल्फ असेंबल ल्यूमिनेसेंस प्रोब बना सकते हैं क्योंकि वो ल्यूमिनेसेंस है, और उसके सेल्फ असेंबली प्रॉपर्टी हम इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं। हम कैटलिसिस ट्राई करते हैं, जो कि उसका मेन फीचर है फ्लेवोएंजाइम्स नाम है। और एक दूसरा जो बायो इंस्पायर्ड ल्यूमिनेसेंट प्रोब्स है, जिसको हम उसको प्रोब के रूप में यूज कर सकते हैं, फ्लोरेसेंट प्रोब के रूप में यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन। तो आज के टॉक के लिए मैंने सोचा कि मैं दो छोटे एग्जांपल्स उठाऊंगा, एक फ्रॉम कैटलिसिस पार्ट, दूसरा एक बायो इंस्पायर्ड ल्यूमिनेसेंस प्रोब का पार्ट। और मैं आपको ट्राई कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, स्पेशली द स्टूडेंट्स पार्ट, कि नेचर से इंस्पिरेशन लेके हम कैसे अपने मॉलिक्यूल को थोड़ा रीडिजाइन कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो अगर आप एंजाइमेटिक पार्ट को उठाएं जहां पे वो कैटलिसिस करता है, आप देखेंगे, और हम ट्राई कर रहे हैं स्पेसिफिकली फ्लेविन मोनोऑक्सीजनेस एंजाइम को मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा है कि आप एक प्रोटीन लेते हैं, उसके अंदर ये कोफैक्टर के रूप में है, और ये अपनी प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है विद डिफरेंट नॉन पोलर इंटरेक्शंस, राइट। इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि अगर आप इस मॉलिक्यूल को इस प्रोटीन से बाहर निकाल लेते हैं तो ये मॉलिक्यूल अपना काम करना बंद कर दे रहा है, ये कोई एंजाइम का कोई कैटलिसिस करने में सक्षम नहीं रह गया है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम कुछ उसको सिंपल डिजाइन बना सकते हैं ताकि वो इसको बाहर निकल, क्योंकि प्रोटीन और एंजाइम को लेकर के काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हार्श कंडीशंस को अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो टू सिंप्लीफाई एक सिंपल मॉडल बनाने के लिए हम क्या कुछ ऐसा डिजाइन कर सकते हैं मॉलिक्यूल को जिससे वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी अपनी रिटेन कर सके। तो इसके लिए हमने पहले उसके मैग्नेटिक इनसाइट को समझने की कोशिश की कि आखिर ये अपना कैटलिसिस करता कैसे है। तो आप देखोगे कि ये आइसोएलेक्सिन रिंग है, ये उसका रिडॉस फॉर्म है, और मेन स्टेप यहाँ पे है जहाँ पे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये हाईली अनस्टेबल पर हाइड्रो पेरोक्साइड मॉलिक्यूल बनाता है,
और वो फिर एक ऑक्सीजन को ट्रांसफर करके और अपना बाकी वापस सेम इनिशियल फॉर्म में चला जाता है। तो इसका जो की फॉर्म है वो ये स्टेप है जहाँ पे ये हाईली अनस्टेबल है और जो पूरा प्रोटीन मैट्रिक्स है वो यूज होता है इसको स्टेबलाइज करने के लिए, इसके फॉर्मेशन के लिए। सो हमने सोचा कि क्या हम इसको विदाउट अ प्रोटीन एक सिंपल पेप्टाइड चेन को इन्वॉल्व करके हम इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं क्या, इसके फॉर्मेशन को हम प्रोसीड कर सकते हैं क्या। तो हमने एक सिंपल मॉलिक्यूल डिजाइन किया, अगेन ये आइसोऑक्सीजन हमारा कोर था, और सिंपल एक पेप्टाइड मोटिव उसके जो ये कैटलिटिक साइट है इसके नियर बाई एक पेप्टाइड को कनेक्ट करने की कोशिश किया, ताकि शायद वो उस जो नॉन कोलन इंटरेक्शन जो प्रोटीन्स में होता है वो उसको स्टेबलाइज करे और हमको एक कैटलिटिक रिएक्शन दे सके। मैं ये पार्ट स्किप करूंगा जहाँ पे हम लोग ने वो सिंथेटिकली उसको मॉलिक्यूल को बनाने की कोशिश की, डू अप्रोच लेकर के इधर एमिनो एसिड एक एमीन ग्रुप को पेप्टाइड्स के दो एंड, जो कि एक कार्बोक्सिलिक एंड होगा एक एमिनो एंड होगा, और उससे रिएक्टिविटी करके कनेक्ट करने की कोशिश किया। हमने उसको इस प्रोसेस को स्टेबलाइज किया, पूरा सिंथेटिकली जो मेथोलॉजी होती है वो डेवलप किया, और फाइनली हम जिस भी तरह का फ्लेवोपेप्टाइड बनाने की चाहते हैं, वो चाहे 3 एमिनो एसिड के साथ है, चाहे 2 एमिनो एसिड के साथ है, ऑफ कोर्स चाहे एक एमिनो के साथ है, एक एमिनो एसिड के साथ में हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं कोवेलेंटली लिंक। सो एक बार जब हमने बना लिया तो हमने एक प्रीलिमिनरी टेस्ट किया कि अगर हम ये पेप्टाइड कनेक्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या क्या रिएक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है। और इस रिएक्टिविटी को चेक करने के लिए हमने सिंपलेस्ट एक सल्फॉक्सिडेशन रिएक्शन लिया, जहाँ सल्फाइड सल्फॉक्साइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एक ऑक्सीजन का ट्रांसफर है सेलेक्टिवली, सल्फोन्स में नहीं जहाँ पे 2 ऑक्सीजन होते हैं, एक सिंगल ऑक्सीजन का ट्रांसफर करना है। तो जो फ्लेविन मॉलिक्यूल है अगर वो पेप्टाइड से कनेक्टेड नहीं है, आप देख सकते हैं कि यील्ड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अगर लॉन्ग चेन है और डाइपेप्टाइड या ट्राइपेप्टाइड हमने कनेक्ट किया है, वहां पे भी उसका यील्ड ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। लेकिन जहां पे हमने एक सिंगल एमिनो एसिड कनेक्ट किया था वहां पे कुछ यील्ड हमको दिखाई पड़ी है। 48% यहाँ पे वो फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप था। तो हमने ये सोचा कि क्या एक फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग एमिनो एसिड से हम 48% पा सकते हैं, क्या इसमें उस एमिनो एसिड का भी कोई रोल है। अगर हम डिफरेंट एमिनो एसिड्स को चूज करें तो क्या हमारे पास एक डिफरेंट फील्ड आएगा, उसकी रिएक्टिविटी उस इंटरमीडिएट जो जिस इंटरमीडिएट स्टेट की हमने बात किया तो उसकी स्टेबिलिटी पे कोई इफेक्ट आएगा। उसको चेक करने के लिए हमने डिफरेंट फ्लेवो एमिनो एसिड्स बनाए, जिसमें हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ एमिनो एसिड को कनेक्ट किया, ग्लाइसिन को कनेक्ट किया, बीटा एलिनिन को कनेक्ट किया, प्रोलिन, फिनाइल एलिनिन एंड सो ऑन। और हमने पाया कि जो बेस्ट यील्ड हमको मिल रहा है वो फ्लेविन ग्लाइसिन से मिल रहा है, प्रोलिन से नहीं मिल रहा है, फिनाइल एलिनिन से नहीं मिल रहा है एंड सो ऑन। बट स्पेसिफिकली जब हमने उसको कनेक्ट किया था ग्लाइसिन को आइसोलेक्सिन से, तो हमें ऑलमोस्ट लाइक 85% यील्ड मिल रहा है। और फर्दर इस रिएक्शन को एक पॉइंट और यहाँ पे है कि अगर आप दोनों को कोवेलेंटली लिंक न करें, आप सिंपल एक ग्लाइसिन ऐड कर दें और अपना फ्लेविन ऐड कर दें, तो भी आपको यील्ड अच्छी नहीं मिल रही है। फर्दर उसको हमने और जब रिएक्शन ऑप्टिमाइज किया तो वी एंड अप गेटिंग लाइक क्वांटिटेटिव यील्ड, लाइक 97% यील्ड हमको मिलने लगा। डिफरेंट सब्सिट्यूट्स इसको भी हमने ट्राई किया, हम उसके डिटेल में नहीं आएंगे। अभी क्वेश्चन ये था कि इस एमिनो एसिड का आखिर रोल है क्या, क्योंकि अगर डिफरेंट एमिनो एसिड हम कनेक्ट कर रहे हैं और हमको डिफरेंट यील्ड मिल रही है, ऑफ कोर्स ग्लाइसिन बेस्ट है, वो बेस्ट क्यों है। तो उसको समझने के लिए हमने थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस कराए इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर सौरभ सिंह, वो आईटी हैदराबाद में ही काम करते हैं। और उनका जो प्रीलिमिनरी जो डेटा था वो ये कहता है कि सारे के सारे ये एमिनो एसिड जो भी हमने कनेक्ट किए हैं वो एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन बनाते हैं उस हाइड्रोपेरोक्सो एसिड के साथ में। अगर सारे के बना रहे हैं तो फिर यील्ड सेम होना चाहिए, तो फिर डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है। डिफरेंस आ रहा है जो नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स हैं, जो उनका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, स्पेशल अरेंजमेंट है विथ रिस्पेक्ट टू ये रिएक्टिव साइट के, उसके बेसिस पे। और अगर आप देखेंगे अदर देन दिस ग्लाइसिन, जो यहाँ पे फ्लेविन ग्लाइसिन था जहाँ पे सिर्फ एक कन्फॉर्मर पॉसिबल था, बाकी सब में कई सारे डिस्ट्रैक्शन थे, कई सारे वेरिएशंस थे कन्फॉर्मर्स में, नंबर्स में, ओरिएंटेशन में, और शायद वो गवर्न कर रहा था इसकी बेटर रिएक्टिविटी। ओके, सो इन अ नटशेल उसका ऑफ कोर्स एक प्लॉजिबल मैकेनिज्म दिया था। इन अ नटशेल इस स्टोरी का मतलब टेक होम मैसेज ये था कि एक बड़े से एंजाइम को, प्रोटीन को हमने कट डाउन करके एक सिंगल एमिनो एसिड कनेक्ट किया और उसके की इंटरमीडिएट को ध्यान में रखते हुए, ताकि वो उसको स्टेबलाइज कर सके। अगर वो स्टेबलाइज कर सकता है तो हमारी ये रिएक्टिविटी हमको एक बेटर वे में मिलती है।
दूसरा जो एक टॉपिक जो मैं नटशल में डिस्कस करना चाहूंगा, मुझे बताया गया है कि आप 15 से 20 मिनट तक बोल सकते हैं। तो एक सेकंड स्टोरी जो मैंने लिया हुआ है वो बायोल्यूमिनेसेंस। नेचर एक बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो कर रहा है बेस्ड ऑन दिस फ्लेविन बेस्ड फ्लोरेसेंट प्रोटीन्स। नेचर में एक फ्लेविन बेस्ड फ्लोरेसेंट प्रोटीन्स है, मतलब दे कैन फ्लोरिश वंस यू विल शाइन, आप लाइट से शाइन करोगे वो एमिट करेगा, वो आपको डिफरेंट कलर दिखाएगा। नाउ इम्पोर्टेंट ये है कि वो एक नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन नॉर्मल है, नॉर्मल कंडीशन में वहां पे तो फ्लोरेसेंस इमेजिंग शो कर ही रहा है। लेकिन अगर हाइपोक्सिया कंडीशन में आप जाते हो, मतलब जहाँ पे कई सारे डिजीज स्टेट्स में, कैंसर में, सेरेब्रल डिस्पनिया में, अगर आप जहाँ पे सेल के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है, तो वहां पे भी ये मॉलिक्यूल फ्लोरेसेंस शो कर रहा है, जहाँ पे बाकी कई सारे कॉमर्शियली अवेलेबल जो मटेरियल्स हैं वो उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि ये फ्लेविन बेस्ड नेचुरल प्रोटीन्स हैं, हमने सोचा कि अगर आप सेल को एक देखोगे, एंड आई थिंक डॉक्टर तौरीक ने ऑलरेडी काफी कुछ एक्सप्लेन किया है बायो इमेजिंग के एस्पेक्ट में, तो मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बट द पॉइंट इज कि अगर आप एक सिंगल सेल देखेंगे तो उसमें कई सारे ऑर्गेनलीज हैं, राइट। उसमें लाइसोसोम है, राइबोसोम है, न्यूक्लियस है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ पे क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि आप जान रहे होगे स्टूडेंट सारे, कि वो पावर हाउस ऑफ द सेल है, राइट। डिजीज स्टेट्स में होता क्या है कि इस पावर हाउस भी अफेक्टेड होता है, वो एनर्जी प्रोडक्शन बंद करता है या डिस्टर्ब होता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इस फ्लेविन सिस्टम को लेके इस पूरे एक सिंगल सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया को टैग करें और उसमें होने वाले किसी भी चेंजेस को हम मॉनिटर कर सकें? अगर वो पॉसिबिलिटी होता तो दैट विल बी रियली गुड। नाउ अगर आप देखोगे कॉमर्शियली अवेलेबल मार्केट में क्या चीजें अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेलेक्टिवली टैग करने के लिए मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है, कई सारे मटेरियल्स अवेलेबल हैं। डॉक्टर तौरीक ने भी कई सारे एग्जांपल्स दिए थे, कुछ एग्जांपल्स मैंने भी यहाँ पे शो किए हुए हैं। लेकिन एक चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, और अगर आप डॉक्टर तौरीक का भी प्रेजेंटेशन याद हो तो आप देखोगे ये जितने भी माइटोकॉन्ड्रियल टैगिंग ग्रुप्स थे वो सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज थे। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन को आप देखोगे तो वो खुद भी काफी एक्टिव मॉलिक्यूल है। उसमें अगर आप एक पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल डालते हो तो वो फ्लोरेस तो करेगा, वो सिग्नलिंग तो देगा, लेकिन वो उसका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो उसको डिस्टर्ब कर सकता था। तो आइडिया यह है कि क्या एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल को लेकर के, एक बायोलॉजिकली कंपैटिबल मॉलिक्यूल को लेकर के हम एक फ्लोरेसेंट टैग बना सकते हैं जस्ट फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। एंड अगेन द बेस्ट पार्ट विल बी कि आप उसको लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में आप उसको मॉनिटर कर पाओ। ओके, तो उसके बेसिस पे हमने देखा कि ओके, अगर हम सिंपल मॉलिक्यूल लेते हैं, लाइक आई सेड बिफोर, कि आप एक प्रोटीन मैट्रिक्स को आप हटाते हो तो वो इमेजिंग, वो प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं मिस करने लगता है। तो ये अगर आप सिंपल मॉलिक्यूल लें विदाउट एनी फंक्शनैलिटीज, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, सिंपल आइसोएलेक्सिजन रिंग अगर आप लेते हो तो आप देखोगे कि वो सेल में किसी पर्टिकुलर उसमें नहीं जा रहा, वो सेल के अंदर जा रहा है या सेल के सरफेस पे ही बैठा हुआ है, और कोई खास सिग्नलिंग, कोई खास मॉनिटरिंग आप उससे कर नहीं पा रहे हो। तो हमने उसको डिजाइन किया कि एक उसमें एक और कनेक्टेड कनेक्ट करें, विच इज द ट्राइफिनाइल एमीन। और दो प्रॉपर्टीज की इंटरेस्टिंग थी, विच इज द वाटर सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ाता है, और सेलुलर अपटेक, सेल के अंदर जाने की टेंडेंसी को बढ़ाता है। ऑफ कोर्स मॉलिक्यूल में एक फोटोकेमिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन डोनेशन कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, ताकि ये सिस्टम इस वाले सिस्टम से, आइसोलेक्सिन द फ्लेमिंग सिस्टम से आपस में कनेक्ट कर सके, आपस में बातचीत कर सके, राइट। तो हमने एक सिंपल सिंथेटिक मेथोलॉजी डेवलप की, जस्ट 4 स्टेप की, और ये मॉलिक्यूल बनाया, कैरेक्टराइज किया। जब हम इसके फंक्शनल प्रॉपर्टीज पे अगर आएंगे, और मैं एक चीज सिर्फ यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा, ये इसका फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रा है सॉल्यूशन में। ओके, आप फ्लोरीमीटर से आप चेक करते हो, तो आप ये जितने भी इंटेंस पीक देख रहे हो वो सारे के सारे नॉन पोलर मीडियम में है, और जितने भी पोलर मीडियम है इंक्लूडिंग वाटर, आपका ये फ्लोरेसेंट इमेज सिग्नलिंग एकदम गायब है। तो ये काफी एक डिसअपॉइंटिंग पार्ट है, क्योंकि जब आप सेलुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं, आप सेल इमेजिंग की बात करते हैं, तो सेल मतलब इनसाइड आपके एक वाटर, एक एक्वस एटमॉस्फेयर होता है, राइट। बट एनीवे हम इसको प्रोसीड किए और हमने इस पे
कोलैबोरेट किया प्रोफेसर शुभ नारायण रथ से, जो कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में है, और हमने उसको चेक करने की कोशिश किया डिफरेंट सेल लाइन में, कैंसर सेल, नॉर्मल सेल, किसी भी प्रकार का सेल हो, और उसको कंपेयर करने की कोशिश की जो कॉमर्शियली अवेलेबल जो मॉलिक्यूल है विच इज द माइटोग्रीन, उसके साथ कंपेयर करने की कोशिश की कि हाँ अगर ये नोन है माइटोग्रीन के साथ में, तो वो एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे जा रहा है कि नहीं। और ये ओवरले इमेजेस है, आप पियर्सन कोएफिशिएंट मेथड से आप चेक कर सकते हो कि ये दोनों एग्जैक्टली मैच हो रहा है कि नहीं, सुपर इम्पोज हो रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि जो TPF11 हमारा मॉलिक्यूल है वो भी एग्जैक्टली माइटोकॉन्ड्रिया पे ही जाके टैग कर रहा है। आप उसको एनिमल मॉडल में देखना चाहोगे, 3D मॉडल में देखना चाहोगे, तो अगर आप पूरा एक बंच ऑफ सेल्स ले रहे हैं, आप वहां पे भी अगर आप उसको टैग करना चाहोगे तो वहां पे भी वो सिग्नलिंग शो कर रहा है। नाउ मैंने पहले भी कहा कई सारे मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी कॉमर्शियली अवेलेबल है, तो उसके फायदा क्या है, हमारे मॉलिक्यूल के फायदा क्या है। बट उसके पहले एक क्वेश्चन जो जो चल रहा था वो ये कि ये वाटर में कोई एमिशन शो नहीं कर रहा था। तो अभी ऐसा क्या हुआ कि वो एमिशन शो करने लगा, और माइटोकॉन्ड्रिया पे पहुंचते ही उसका एमिशन वापस आता है। कुछ उसके डिफरेंट फिनोमिनाज हैं जो हमने चेक करने की कोशिश की, ये समझने के लिए कि आखिर वो ये इसकी प्रॉपर्टी वापस कैसे आती है। हमने चेक किया एग्रीगेशन इंड्यूस्ड एमिशन या पीएच के चेंज की वजह से वो क्या सिग्नलिंग वापस दे रहा है, या रिडॉक्स स्टेट की वजह से सिग्नलिंग वापस दे रहा है। लेकिन जब हम उसको नॉन पोलर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इन सॉल्यूशन की ये स्टडीज हैं, तो आप देख सकते हो कि जैसे आप टाइटिन एक्स दे रहे हो, जैसे वो टाइटिन एक्स क्या करता है कि उसको माइसुलर फॉर्मेशन में डाल करके वो उसको एक नॉन पोलर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, तो वो इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आप इसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो। मतलब कि मोस्ट प्रोबेबली ये माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस पे जो सेल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन पे जाके बैठ रहा है, छुप रहा है, और वो अवॉइड कर रहा है उस एक्वस मीडियम में जहां पे वो उसका एमिशन पूरी तरह से क्विंच हो जा रहा है। एक दूसरी काफी इंपॉर्टेंट स्टडी जो कि सेल वायबिलिटीज है। आपका मॉलिक्यूल टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी तरह की बायो इमेजिंग की बात कर रहे हैं, आप उसको अगर यूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए। तो हमने वो सेल वायबिलिटीज स्टडीज भी चेक की थी, यहाँ पे वो टॉक्सिक नहीं नजर आया था। हमने कमर्शियल मटेरियल से कंपेयर करने की कोशिश की थी कि कितनी जल्दी आपको वो सिग्नलिंग प्रोसेस दे सकता है। तो आप देख सकते हो कि पहले 5 मिनट तक जो कमर्शियली अवेलेबल जो अभी जो करंटली यूज होता है, वो पहले 5 मिनट तक या 7 मिनट तक वो ऑलमोस्ट कोई भी सिग्नलिंग नहीं दे रहा है। बट हमारा मॉलिक्यूल स्टार्टिंग के फर्स्ट मिनट से ही वो एक रेड स्पॉट आप देख रहे होंगे, जो कि वो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच करके वो रेड सिग्नलिंग देना शुरू कर रहा है। नाउ कितने दिनों तक आप उसको यूज कर सकते हो? अगर आप ये ग्रीन चैनल देखोगे, ये ग्रीन चैनल जो है वो 5वें 7वें दिन तक आते आते जो कॉमर्शियल डाइट जो अभी जो यूज हो रहा है वो काफी उसकी सिग्नलिंग काफी वीक हो जा रही है, वो ऑलमोस्ट कोई सिग्नलिंग नहीं दे रहा है। लेकिन हमारा जो मॉलिक्यूल है वो 12 दिन तक भी, अगर आप देखोगे ये रेड स्पॉट जो रेड बार डायग्राम है, आप देखोगे कि लगभग 64% जो एमिशन है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट डे, वो उसको रिटेन कर रहा है। मतलब मॉलिक्यूल आपका स्टिल प्रोसेस है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमने हाइपोक्सिया की बात की थी शुरुआत में, कि कई सारे माइक्रो ट्रैकर्स अवेलेबल हैं, लेकिन लेकिन वो जब लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, जो कि कई सारे डिजीज का एक क्रिटिकल स्टेज होता है, वहां पे वो फेल करते हैं। तो हमने वो जो स्टडीज किया था, हमने सेल के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम करने की कोशिश किया फ्रॉम 21% जो कि नॉर्मल ऑक्सीजन होता है एक सेल के अंदर, टू 1% यहाँ पे ऑलमोस्ट नहीं है। और आप देखोगे कि सेकेंड डे तक आते आते ये जो ग्रीन चैनल है जो कि कॉमर्शियली अवेलेबल माइक्रोग्रीन का था, वहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक अ ब्लैक स्पॉट है। बट इस रेड चैनल में आप देखोगे कि फिर भी वो उसकी सिग्नलिंग रिटेन कर रही है। सो नेटशेल में मैं आपको कहूँ तो मैं हम लोगों ने दो एक एग्जाम्पल डिस्कस करने की कोशिश की है, जहाँ पे जो कोर है वो वही फ्लेविन रिंग है, लेकिन उसके फर्दर मॉडिफिकेशन से दो डिफरेंट तरह के एप्लीकेशंस हमने डिजाइन करने की कोशिश की, एंड कम्प्लीटली बेस्ड ऑन बायो इंस्पायर्ड और बायोमिमेटिक सिस्टम। नाउ इसके साथ मैं थैंक करना चाहूंगा अपने रिसर्च ग्रुप का। ऑफ कोर्स दिस इज आवर स्मॉल रिसर्च ग्रुप, और ये 3 नए एडिशन है, वन फ्रॉम इथोपिया, द अदर 2 आर फ्रॉम एक ये गौरव रिसेंटली ज्वाइन किया बलिया से, और ये तनीमा है, इसने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। और ये फर्स्ट स्टूडेंट था, इसने अपनी पीएचडी खत्म कर लिया है, और ये अभी यूएस के सैन डिएगो में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पोस्ट डॉक करने गया है। एंड सेकंड स्टूडेंट हर्षा इज
ये अभी इसी साल कुछ महीनों में ये सबमिट अपने थीसिस सबमिट करेगी। तो आज जो मैंने जो वर्क शो किया है वो एक पार्ट जो कैटालिसिस वाला पार्ट था वो इस्टेब्लिश किया था मौली ने, डॉक्टर मौली नाउ, और जो दूसरा पार्ट है जो बायो इमेजिंग वाला पार्ट है वो ये हर्षा ने इसको ऑप्टिमाइज किया था। और जस्ट फॉर द अनाउंसमेंट, जो यंग स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे हम लोग एक्टिवली स्टूडेंट सर्च कर रहे हैं हु वांट टू ज्वाइन आवर ग्रुप एज अ पीएचडी स्कॉलर। एंड अगर आपके पास नेट जेआरएफ है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। हमारा एक इंटरव्यूज अभी होने वाले हैं। इवन अगर आपने अप्लाई नहीं भी किया है और अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हो तो आप डायरेक्टली राइट कर सकते हो और we'll see what we can do. Acknowledgements, of course, Serve India और IIT हैदराबाद से heavily funded है, so it's we are surviving with that one. और इससे पहले कि मैं ये टॉक खत्म करूं, एक जस्ट एन ओवरव्यू की वो IIT हैदराबाद, सिंस इट्स अ न्यू इंस्टीट्यूट, आई शुड नॉट बी सेइंग, मुझे नहीं कहना चाहिए कि नया इंस्टीट्यूट है क्योंकि ऑलरेडी हमने अभी 16th फाउंडेशन डे मनाया है, मतलब 16 साल हो चुके हैं। लेकिन एक रफ अगर ओवरव्यू देखें, एक रफ जिसके एकेडमिक एरिया का अगर मैं दिखाऊं तो ये इसका इंजीनियरिंग क्वार्टेट है, मतलब सारे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड ऑल दैट, वो इस क्वार्टेट में रहते हैं। और जो साइंस का क्वार्टेट है वो ये है, जो कि बायोमेडिकल डिपार्टमेंट, मटेरियल साइंस, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये इस तरह से। एंड दीज आर द एक्चुअल, ये आपके एक्चुअल बिल्डिंग्स हैं जो कि मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम अभी काम कर रहे हैं। ये इसका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। स्टूडेंट्स हॉस्टल जहाँ पे स्टूडेंट्स अपना रहते हैं, और ये मेस एरिया जहाँ पे दे कैन गो फॉर देयर फूड एंड ऑल दैट। रिसर्च पार्क वहाँ पे डेवलप हुआ है और फैकल्टी एंड स्टाफ सोसाइटी कॉलोनीज हैं। इसके साथ मैं जस्ट आई वुड से थैंक यू, आपने इनवाइट किया, एंड आई विल बी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चंस। मैंने कोशिश किया अपने टाइमलाइन में स्टिक करने को, अगर थोड़ा एक्सटेंड हुआ हो तो बस माफी चाहूंगा। This is Dr. Jiten Bhatt, your junior from IT Kanpur. For you guys, I have to tell that मैं और आशुतोष मिश्रा सर लगभग 5 साल साथ में IT कानपुर में एक ही लैब में आमने सामने की बेंच पे काम किए हैं। ये मेरे सामने की बेंच पे है और काफ़ी अच्छा हम लोगों का, क्योंकि ये गोरखपुर के थे और मैं बोंगा का था, तो उस तरीके से काफ़ी राज की चीज़ें वो जानते हैं जो लैब में मेरे बाकी नहीं जानते हैं। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं है, और मेरे एक बार कहने पे वो एग्री हो गए इसको टास्क देने के लिए, तो इसलिए मैं पर्सनली अपने आप को इन्वाइट कर लिया खुद ही कि मैं आपको कम से कम अपनी तरफ से रिगार्ड और थैंक्स बोल सकूं कि मेरे एक बार कहने पे आपने टास्क देने के लिए एग्री कर लिया। तो थैंक यू आशुतोष मिश्रा सर, थैंक यू सो मच। Now our next speaker will be Dr. Santosh Kumar. Uh, Santosh Kumar is working as assistant professor from in Himachal Pradesh University, Shimla, and he has done his master's and PhD from Punjab University Department of Chemistry, and then he moved for postdoctoral research to University of San Diego, Chile. Now he is working in University, Himachal Pradesh University, and I and Santosh Chopra also, we know each other very well, because when I received the Young Scientist Award and started working in Punjab University Department of Chemistry, he was working as a PhD student there. So we were able to publish like 6-7 papers from there onward, and still we have research collaboration. And it is for you guys, like Ashish Mishra sir is there, Santosh Chopra is there. If you are able to qualify JRF or any kind of competitive exam, you can go and join for PhD as well. So it is opportunity for you as well. Okay. So over to you, Dr. Santosh Kumar sir.
सर आवाज आ रही है क्या अभी? सॉरी फॉर द डिस्टर्ब. Yes, sir. You are audible. ओके ओके, थैंक यू सर. यहाँ पे थोड़ा बारिश हो रहा सर, इस वजह से कनेक्शन में भी लॉस्ट हो गया हो. So I am just start sharing my screen. Is it visible, sir? Screen? Hello, is it visible? Yes, sir. So the title of today's talk is Fissile Fabrication of Magnetic Carbon Composites from Hydrochar via Simultaneous Activation and Magnetization for various environmental remediations. So in this work we have started the working in this field since I joined the university in 2020. And basically I am working with the two aspects. One is the crystallography and one with this hydrochar materials for environmental remediation. So everyone, hydrochar is a material which we can derive from various for example feedstocks, or for example various kinds of waste, bio waste. So we will undergo carbonization, hydrothermally carbonization of the material, and that material is very successful in eliminating the various kinds of pollutants. And before starting my presentation, so I want to क्यों कर रहे हैं. So basically I belong to Himachal and there are a lot of water streams here और rivers, बहुत सारी rivers है यहाँ पे. For example जैसे सतलुज river, ब्यास river, और they are heavily polluted these days. For example and moreover there are various industries nearby. For example in Baddi there are pharmaceuticals as well as various textile industries, and they are just leaving that water from the industry to the water stream directly. After treating, they are treating the water what that is heavy polluted after treatment itself. So for example, in last year there was a report that antibiotic residue in river confirmed that 37 of HP forms in dog. So that is strict guidance from the NGT that warns against the violators. So it is very necessary to put a concern, or the state government is also putting a lot of focus on this type of remediation of water treatment. So we are moreover. So basically, in Himachal or in Western Himalayas, we have lot of pine forests actually. So pine forest is facing a serious disaster in terms of forest fire. For example, in last year December 2023, यहाँ पे कुल्लू में एक बहुत ज्यादा फॉरेस्ट फायर आया था, और उसकी वजह से approximately 20 people died in December 2023. And Himalaya is on fire again and again. So Western Himalaya is one of the region that contain more than that ensemble more than 25,000 species of different bioorganisms. So and some of them are endangered species. So it is very important to work on such areas. So pine needles, we can use such pine needles for the production of various kind of advanced material, and that material is basically solve two problems. One is the we will be escaped from the forest fire, and second, importantly, we can use that material for water pollution also. So nowadays there are many methods, बहुत सारे method use हो रहे हैं. So current methods are in use is adsorption methods basically,
And second is the microbial fuel cell, which is used for the treatment of water, polluted water. So Fenton-like remediation is Fenton-like process is very important in treating the water pollution. And nanotechnology is also playing an important role in photocatalysis of or dye degradations some way. So in this field, for example, in this work, I am working with the various kind of feedstocks, basically with the pine needles, as well as some of the local waste products from Himalayan regions. And we undergo hydrothermal treatment for this material, and we will liquid separations, process water, and then that cake we will dried, and we can use that as a absorbent for various kind of pollutants in water. So such kind of material, such kind of hydrochar, or you can say the biochar, is important adsorbent for water contaminants, or it is also act as a fertilizer or various kind of energy application, supercapacitor devices some people are using. So in another way, uh, for example, we can carbonize biomass by pyrolysis also, not by hydrothermal. By pyrolysis, we can under biochar, and then with biochar, we can make it functionalize with sulfonation, aminations, oxidation, or metal loading. Then we can undergo various kinds of, for example, metal adsorptions, or we can undergo catalysis by somehow. So this find various applications in pharmaceutical industry, domestic or oil spills industry. So in this work, recent trend in hydrochar, basically, I want to show you some latest literature, which is in after 2020. So this is hydrochar, which they have derived from certain kind of orange peel. Study the adsorption studies, as well as they undergo desorption experiment also with the HNO3. So next, ये मटेरियल जो है, ये मटेरियल फॉर एग्जांपल कैडमियम लोडिंग के लिए 93% रिमूवल कर रहा है यहाँ पे, और 93% कैडमियम रिमूवल कर रहा है, और साथ में डिजॉल्व करके दिस मटेरियल इज यूज्ड अगेन एज ए material for recycle material for 7 cycles. So this is a work, and in one of the another work, they undergo the purified water with the black liquor, and from the lignin waste, basically the pine needle से उन्होंने करा ये. तो pine needle को इन्होंने क्या करा कि based lignin and hydrothermal treatment and undergo with iron salt, and this material they utilized for the thallium adsorption. Basically this material which they lignin based जो है हमारा, वो 30 सेकंड के अंदर यहाँ पे काम कर रहा था. 30 सेकंड के अंदर उन्होंने क्या करा, इस मटेरियल को दे rapidly whole magnetic material, and they use this material for the thallium removal. So in another work by some another scientist, एक तो मेथड ये होगा कि हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं मटेरियल को बाय एडिंग द सॉल्ट, बाहर से कोई सॉल्ट डाल के हम उसको क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज कर सकते हैं. एक दूसरा मेथड है कि कोई प्लांट है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइटोलेका प्लांट है, इसको इन्होंने क्या करा कि दे ग्रो दिस प्लांट इन प्रेजेंस ऑफ आयरन सॉल्ट. फॉर एग्जांपल they experimented this for example 3 months, and they grow this plant, and this plant leaves were rich in iron content, and they undergo hydrothermal carbonation for this material directly, and they found that this material is also magnetic in nature. And magnetic in nature means they found that with the binding energy, they found that this material is forming
Fe2O3 materials, and this material is by they use this material for cadmium adsorption with a very for example, the experiment they performed at this work is 246.6 milligram per gram by hydrothermal synthesis. They utilize this material under the normal pH condition, that is the pH 5 conditions, and at ambient condition, that is room temperature conditions. So this is another work. So I want to put focus that what we are doing in these days. So when I joined here, then we start working on pine straw because it's a problematic also in Himachal Pradesh. So beside my uh, beside my research field, I start working in this field also. So deionized water, for example, I start with the यहाँ पे pine straw powder के साथ हमने काम start करा, और then we use the end doped, for example end doped, and यहाँ पे हमने material बनाया था एक pine straw needle लेके यूरिया और iron salt mix करके. So this we use only the very normal conditions, that is deionized water stirring, for example mixture was filtered and dried, and this tube furnace के ऊपर हमने इसको 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर we produce the material that is iron nitrogen rich materials biochar which has, for example, the results were found that the wet absorption results were there. So we found that the iron rich iron and nitrogen जिसमें दोनों मिक्स करे थे हमने, that material shows a very high surface area, and pore size is also for example 40 diameters approximately. So for example, this was the intensity plots. For example, this is the XRD curves. So here we saw the magnetization curves also. So in this case we have shown that with the IR we confirm the formation of these magnetic materials, and this material was find various application in sulfonamide antibiotic formation. So we are targeting here the industry, that is pharma industry, and that is we have collaboration with the industry that is Morpain in Parmanu R&D. So they make the sulfonamide drug, and the water extract from the industry contains the sulfonamide residues. So we were working on that. In this case, we have worked with the sulfonamaxazoles drug, and we find that this cycle with 93.4% removal, or with this such kind of materials, so work for 4 cycles also. So this is the one of the work, but this is we are going to publish this work soon. So in the next work we have published this work recently also. So in this work we have derived the material that is 1.5 gram glucose in 70 ml water, and from glucose we derive the carbon material actually. So in this case we use iron sludge from the base material, from the base iron sludge, and the biological sludge, that is algae, we used in this case, and then vigorous stirring we at 600 rpm. Then we have this is hydrothermally, or we have hydrothermally this carbonized this material to 200 degrees Celsius. Then we produce the material like MBC. We have denoted this MBC, and then after 800 degrees Celsius under nitrogen atmosphere we produce activated carbon, magnetically activated carbon. So in this case we found that the result were dissimilar in both the cases. One result is showing that MBC results were showing that it is less magnetic in nature. When we activate this material, it is found that it is highly magnetic, as well as the nitrogen from the wet adsorption itherm. We found that this material is rich in highly surface area. So this material we have shown here that, so this is the PXRD patterns, and this is, for example, this is your this is another IR spectra, and from this MAC we have recorded the SEM images for this material. This material showed that this material is porous in nature, somewhat globular in nature, and iron core is
really showing that this is a porous material, and this material can be act as a best absorbent for the various kinds of. So we find this application of this material in various kinds of sulfonamide drugs again. So sulfonamide drugs we treated here is this what type of sulfonamide drugs we have procured from the industry, that is morphine. And we found that it is showing the adsorption and pseudo first order kinetics in some cases and first order kinetics in some cases. And we have monitored that concentration is, we have eliminated the concentration within 24 hours. So whole removal will be processed. So this paper is really a wonderful work. So in another work, that is the recent work, we have just submitted this work to to some paper. So rhododendron leaves here we have used for the cationic dye removal, and this is very effective material. One can say this material is effective in rhododendron leaves are very effective in cationic dye removal especially. So here what we are doing, we have taken this RL material, that is rhododendron leaves, and we have activated this material with the help of H2SO4. In some cases we have tried with NaOH, and then we have magnetized this material in presence of iron salt. So we make a 3 combinations, and Sc1, Sc2, Sc3. So these materials, MHC material, so we tried the activity for this material, that is a magnetic nature material. So this material is totally magnetic. You can see from this, after dye adsorption within 25 minutes, this material can remove any kind of contaminants from the water, that is cationic dye especially. This is not working for anionic dyes. So here we can say that this MHC material, last one, this magnetic material is highly effective in eliminating, in absorbing the dye, that is for example, that is here in this case we have 4 dyes, that is CB for crystal violet dye, and we have methyl green. So we find the results were very interesting, and within 25 minutes it is approximately 99% or 98% they are removing in 25 minutes. So this is the important work we have. So here we are working for industry, and we have here we have collected the final effluent of the textile, food and paper industry treatment from the CTP plant in our region. Common effluent treatment plant. So this is a final outlet from the. So we take this. We take this material, and this we employ for the direct samples. Here you can say the video. यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में. Is my voice is hearable to you? आवाज आ रही है सर? Hello? Is it hearable to you? Yes, sir. You are audible. So we have taken this material, and we take the final treatment, and we saw that within 5 minutes this material is very effective. So I am just skipping this video for some time. So this is the initial one, and we have treated this material, and we find that after centrifugation, simple experiment we are performing, because industry needs the simple experiments. So यहाँ पे हमने क्या करा कि इसको सेंट्रीफ्यूज करके जब इसको डिकेंट करा, तो we find that this material totally there will be some color change, or color will be absorbed. So this is the requirement by the industry. So we find that to have the different colors, for example, color was removed by this material. So similarly for pharma inlet category 3 decoloration, we collected this also from the pharmaceutical outlet, and basically this is category 3 inlet, this is the pharma terms, this is somewhat term from the CTP plant. So we treated this material also, and we find that this material is also effective in removing the color again. So we showed that this material is removing the color here somewhat. So real samples we are visualizing. So from Vincent Textile, we are working with Vincent Textile for, this is the final outlet from Vincent Textile, and we have removed the color from this also with this material that I have shown. With the real sample, this material is working effectively. So here this is some picture diagram.
from this biochar material, hydrochar material we have prepared from the rhododendron leaves. We have shown that this decolorant basically, this is absorbing the color, and also in other terms is also decreasing the COD value, that is chemical oxygen demand value, which is very high in these cases. Initial before treatment, these were in thousands, or for like for example for pharma sample it was around 2000, it was 2000 what, after treatment it was 62, in textile industry it was 60, 68, in case of mixture it was 82. So we are achieving some good results in these cases. So here, in another cases, another experiment that I want to show you, that these rhododendron extract can be used for the preparation of nanomaterial, green method nanomaterial, green nanomaterial. So in this case, we have prepared the zinc oxide nanoparticle with this rhododendron extract, and rhododendron extract से हमने ये करा. So we have published this paper last year in chemical papers. This zinc oxide nanoparticle were regular in size and approximately 60 to 70 or within the range that it is showing. And so, जी sir. Okay, sir. Thank you. So this one the work with the nanoparticles and based rhododendron leaves for for chromium oxide, zinc oxide nanoparticle. This is with the doping. We have find the interesting result. And acknowledgement, last one I want to acknowledge our funding agency for sponsoring this project, that is magnetic hydrochar, approximately 10 lakh, and national mission of Himalayan study. They are supporting this project with the grant of 50 lakh, around 50 lakhs. So with these words, I am thankful to the Dr. Jitender and all the organizers for arranging this talk for me. And if you have any query, then please. If you have any query, then please. Hello. Thank you, Dr. Santosh. Actually, we are running out of time, and one of the speaker is waiting to get started. So, I would like to thank you for accepting our invitation to deliver the talk in this conference. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. After the lecture of Dr. Santosh Kumar, our next speaker is Dr. M.L.K, who taken his PG from Usmania University, Hyderabad, and completed his PhD from Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad. Currently, he is working as a postdoctoral fellow in Fukuoka University, Japan. He is going to talk about semi-crystalline polymer model preparation and microstructure analysis of coarse grain molecular dynamic simulation. Now, over to you, Altaf Hussain, sir. Carry on your lecture. Thank you so much, Sunil Kumar. Sure.
Am I audible? Hello? Hello? Am I audible? I'm just having some trouble to share my screen. हेलो सुनील कुमार ये शेयर स्क्रीन में हो रहा है आपके पास में? एक्चुअली अब अभी आ रहा है सर? अभी नहीं, अभी स्लाइड्स दिख रहे हैं। ओके, तो मैं शेयरिंग विंडो जी, जस्ट टाइम। अभी ओके ना? हाँ ओके ओके, हाँ ओके, नाउ इट्स ओके। ओके, थैंक यू सो मच। ओके।
Hello everyone. My name is Mohammad Altaf Hussain, and actually I'm talking from Japan. So it's a little bit late, but I will try to give you some flavor from my research. So this is my recent research I have conducted from by shifting from chemistry background to chemical engineering, and here we are trying to solve some to give some solution from computational perspective to resolve the chemical recycling issue, which is a hot topic in the nowadays in the environment, and which is giving a major global crisis. So today's my topic is preparing a semi-crystalline polymers using the macrodynamic simulations, and how these models will help us to show some solution to in the mechanical properties, mechanical recycling way to enhance the durability of the plastics which are recycled previously. What happened? Those slides. Okay. So, this is my introduction here. So there is a different ways of plastic recycling methods available in the chemical recycling, especially the chemical recycling and pyrolysis and mechanical recycling, and also the biological recycling. Especially the mechanics recycling, we have focused here because it is the intrinsic properties involved in this after the recycling of the materials, and also it's the most economical way where you can see with a minimum manual effort you can regenerate the plastic pellets. So these plastic pellets again we can use by optimizing them the processing methods. Also they can use as new products, or converting them into some secondary materials like using like garbage boxes or some dustbins after taking from the first first preparation of from the raw materials. So far we have seen that mechanical recycling is an economical way, and we don't know that in computational way how we can justify the molecular perspective in this matter. So in Professor Shigeru Yao at Fukuoka University has studied the mechanical recycling using the experimental tin screw extruder, where he has proposed a physical regeneration and physical degradation mechanism. After taking the recycled pellets in the separation state and applying the static shear or dynamic shear, he proposed that in the melt state, in the molten state, when the molecules are sheared, the polymer chains are disentangled completely, and after relaxing, they are completely entangled. And this entanglements and mixing in the proper way is enhancing the mechanical durability. Because of this reason, the mechanically degraded plastics or their properties are regenerated, and their durability has been increased. So they have proposed this hypothesis, but at the molecular level, what is happening, they do not know. So they thought that because of the polymer chains which were not completely mixed, so they are leading to a small tiny number of molecules where you can see the plastic can easily breakable. And to increase the ductility, it is very important to improve the tight chain molecules between the lamellar structures. So the crystalline arrangements in the plastics are called the lamellar structures, which normally the plastics are semi-crystalline. They are comprising of amorphous as well as the crystalline segments within the same microstructure. So when they crystallize it, so they have found that after the relaxation and proper relaxation, after the mixing and after proper relaxation, they have seen a number of tie molecules are increasing within the lamellar structure. So because of that, when the durability is increasing in the mechanically recycling materials. So this is an extra we can say that this is an advanced technology which was obtained from the experimental studies, but at the molecular level, they don't know that what is happening within the polymer chains.
which are plastic in nature. So we have taken up the simulation part and we applied the simulations, and we would like to address what is happening at the mass level, the shear model history, because the shear model history is very important for the crystallization. The history and the stress which is in the mixed state are governing the polymer chain entanglements and orientations are affecting the mechanical properties in the crystalline states. So we would like to do some simulation or mimic the experimental studies, rheological studies from molecular simulation point of view, and we would like to see that how the relaxation effects are affecting the microstructure and ultimately on the mechanical properties. So for this one, we have taken the typical semicrystalline structure, and when we are trying to prepare a semicrystalline structure, it's very challenging from the computational perspective because the crystalline polymers are semicrystalline in nature, and we have to prepare the crystalline and amorphous microstructure within the same molecule. And for the simulation part, it's a very long time taking process. And apart from that, the microstructure must have the crystal networks such as the tie, hold, and cilium, like tail molecules, which are very important in the in giving the mechanical durability, which is important for the recycled plastics. So far we have seen some other simulation models studied from the experts and researchers. So we have seen some chemical engineers, they have developed some homemade codes like the crystalline part, amorphous part, and crystalline part, where the density is varying according to their physical state. So they have prepared using the Python codes, and manually they have generated such kind of models. And in the mechanical properties, they have studied that how the microstructure is governing the mechanical properties. So in terms of the microstructure and the mechanical properties, they have developed, they have understand the structure property relationship. So in order to understand the structure property relationship, one has to understand how the material is behaving in the mechanical deformation process. So far, if you see when the specimen which is under the uniaxial deformations, they behaves like they thermoplastic materials. In the case of high density polyethylene, the graph should look like that. So if you prepare a model in the mechanical properties, once you perform the mechanical properties simulations, the graph uh, should be in this way, where a elastic regime followed by a Young modulus followed by a durability of or plasticity of the material should be appeared in the simulation. So for this one, we have employed different simulation techniques, like we have used some multi-scale models using molecular dynamic simulation as well as the non-equilibrium molecular dynamic simulations. Especially for this model preparation initial steps, we have used the molecular dynamic simulations, and for the mechanical properties and rheological properties development, we have used the non-equilibrium molecular dynamic simulations using the least adverse and boundary conditions. So for this molecular dynamic simulations, we have prepared some models where you can see the chains are completely mixed. And this is an isotropically mixed structure at high temperature. This is the temperature which is higher than the melting point, where the processing temperature is close to that the applied temperature. So there you can tune, you can apply the static and dynamic shear like rheological studies, and based on the shear history, the mechanical properties are different. So we have applied such kind of simulations at the melt state, and then we have crystallized it, and we have found some crystalline and amorphous and crystalline stack fashion laminar structures, which is important. When you apply the shear, you can study the microstructure and property relationship and how it is tuned, how the microstructure is tuned from the static and dynamic shear, and what is happening at the mechanical properties. So from having such structures, you can easily see the structure property relationship in such models. And for the crystallinity calculations, which is highly dependent on the mechanical properties, if the crystalline is more, the mechanical properties are altered. And if you see the high crystalline materials are almost show the high elastic properties. So, and also they are brittle.
And if you want to get some ductile properties, then the crystallinity should be in a balanced way. So similar kind of crystallinity we have checked using the GEOCTA or Octa software, which was developed in the Japan. And also for the entanglement analysis, where the tie, chain and loops molecules are very important in the microstructures. So we have also calculated from these primitive pathway analysis, where you can see the number of chains or the entanglement points, which are highlighted with stars. If these polymer chains are interacting with the other thing, they are developing the topological entanglements. And these topological entanglements are highly affects the mechanical properties, especially in the durability of the plastics. So such kind of information can easily give you some idea that how the mechanical properties would be. You can predict before performing some simulations or experiments from this data. So initially, let's see how we have prepared the semicrystalline structure. And this semicrystalline structure should be alternative laminar orientations. So here I'm just discussing the preparation and characterization of the semicrystalline model. So, and we are going to characterize the same structure with using the density, degree of crystallinity, number of entanglements in the different state in the molten, crystalline, and quench state. And we have calculated the mechanical properties in all the direction of the simulation box to compute the yield and the breakpoint to see how the microstructure has affected the mechanical properties. So this is my model. Actually, initially we have prepared this one. So this is a crystalline, amorphous, and crystalline orientations here, and you can see the orientation order is aligned according to their physical state. And also we have calculated the crystallinity; it is close to 50%, and we have calculated the one-dimensional density profile, and it also showed that for the crystalline segment, the crystallinity is close to 1, and for the amorphous state, it's close to 0.85. And again, it is crystalline, again amorphous, which is according to the densities in their physical state. Like for amorphous, it is 0.85 grams per centimeter cube, and for the crystalline, it is close to 1 gram per centimeter cube, which is according to the experimental values. And for the microstructures also, we have seen some bridge molecules within the chains, and there are chain molecules which are dangling in the microstructure, and there are some loop molecules. Especially the bridge molecules or the tie molecules are very important for our microstructure, especially they governs the mechanical properties. And for the crystallinity calculations, we have used the order parameter calculations by using Python codes. We have calculated the lamellar orientations in the microstructure, and which has shown in the cyan color. You can see in this graph, and the amorphous part has shown with the blue color. And for the mechanical properties, we have used the Henkist kind of strain, where you can see the continuous deformations is calculated with the ratio of its original deformation size of the box. And we have relatively performed a much faster calculations compared to the experiment, though it is faster, but a qualitative information we have obtained at 300 Kelvin with a 0 atmosphere pressure. Where we have this 0 atmosphere pressure we have applied because we would like to see in the neutral state that how these pressure tensors are impacting the mechanical properties for the tensile region or the durability region, whereas the plasticity is very important factor in the recycled materials. So for example, you can see a 10 chain models here. We have shown that the amorphous state is converting into semi-crystalline state. Here you can see step by step, the crystallinity has been increased from 0 microseconds to 1 microsecond length simulations. And here you can see that each chain from the amorphous state is slowly transforming into the semi-crystalline state or crystalline form. And you can see each individual chains are completely crystallized here. They are completely aligned from the random polystructures to a perfectly ordered structure here. Coming to the microstructure analysis, so we have seen that how the amorphous chains are orienting themselves in the simulations during the quenching and melting, and also the isothermal crystallization. So we have seen the amorphous state is slowly transforming into the crystalline state, and the remaining part, because of the entangled part,
which is involving in the other chains, is also it is in the amorphous part as well as in the crystalline part. If you see the 3D structure, the bulk material structure, you can see the orientation is amorphous, crystalline amorphous, and it is a stacked structure. For example, I would like to show that one chain structure, which is a number 10 chain. I have randomly, arbitrarily selected one chain, and I have seen that in the amorphous state, the chain is completely globular, and in the crystalline state, it is a beautifully formed a tail, bridge, and loop structures, where you can see the crystalline part, amorphous part, and crystalline parts are within the same microstructure. So such kind of structures are very important for us to understand the structure property relationship and to predict the mechanical properties, and to also to give the experimental validation from the computational perspective. This is the mechanical properties we have studied here. So if you see the mechanical properties, it's the viscoelastic behavior, and you can see the elastic region followed by Young modulus close to 100 megapascal, followed by a plastic regime, and then the breakage. So similarly, in the microstructure behavior, you can see a completely elastic region, and a cavitization has been formed around 100% deformation, and followed by, due to the bridge molecules, a plasticity has been seen, and then a breakage point is appeared close to the 400% of deformations. This is mimicking the Professor Routledge models from the MIT California, where he has taken the same in-house built the model, and he applied the strain like similar to us in the uniaxial direction. It's a transverse direction. So the cavity has been generated in the amorphous state similar to us. So the mechanical properties are mimicking the same SS curve in our case also. So here there is an animation I would like to show here. You can see that as the uniaxial deformation performed, the 25% deformed structure has shown some elastic modulus close to 50% also. And as the simulation progresses, the multiple chains are aligning along the deformation direction, and this is followed by a cavitization formation, which is due to the early breakage, where you can see some damage here, and followed by, because of the huge number of bridge molecules, so the plastic deformation has been appeared, and close to the 4 before the 3 or 400%, the complete breakage has been appeared here. So the microstructure is completely broken. So there is some crystal dislocation is appeared here because of the deformation is applying. The deformation force is much stronger than the restoring force. So the complete permanent damage has been seen in the close to the 200%, more than 200% deformation. So this is similar to the experimental studies we have seen previously, and it is a highly cited. There are plastic technologies where they have shown such kind of molecular mechanisms in their analysis. So our simulation also predicting the same way. So we can say that the simulation results are mimicking a true high density polyethylene model's characteristics. So even if you apply the static shear and dynamic shear or realistic studies, then the resulted output should be a reliable one. So let us see that what is happening at the rheological properties. Here we have applied some non-equilibrium molecular dynamic simulations to mimic the rheological properties of the plastics, because the rheological properties generation is not an easy way from the simulation points perspective, and you have to apply some different techniques, where the simulation technique should also behave some sinusoidal wave, and the simulation should follow the SLLOD equations, and where the least adverse boundary conditions applied. And if you apply it for more deformations, there is the possibility that the structure also be damaged. So you have to take care of all these things before performing the simulations. So we have tested some selective force fields like PYSR and Trappy force field, which are very famous for plastic materials simulations. So such kind of costly
force fields we have used. And by using the Kyushu University's high performance computations, we have performed these long length simulations. And after performing the simulations, here you can see the dynamic shear deformations where the twisting of these polymer chains are completely mixing the all the chains which are modeling. So similar concept is happening at the experimental deformation, where especially in the dynamic deformation of the rheometric experiments. Because of that one, we have found that the entanglements or topological entanglements are improved. So the crystallization is slower, and because of that, the mechanical durability has increased. But if you see, we have this is the evidence that the simulations which we have performed for 500% of the simulation box is completely a sinusoidal wave has been obtained. So the simulation is they are reliable what we have performed here in this study. So coming to the same point, here we have calculated the densities, and after the deformation, we have relaxed the model. Actually, the molten resin reservoir equipped with the twin screw extruder in the experiments, the molten resin reservoir is relaxing the polymer chains. Because of the relaxations, the experimentalist has believed that the number of entanglements has been increased. So we would like to see from the simulation perspective. So after the dynamic shear, we have relaxed the structure for 100 nanoseconds, and we have taken the different trajectories, and we have calculated their crystallizations. And when we have calculated their crystallization for each snapshot, so we have seen some different trends, especially for the 0 nanoseconds, because of the shear histories remain in the structure, the crystallization is delayed. But when we relaxed for 1 nanosecond, so the crystallization is much faster here. As the simulation is relaxed, is improved for the relaxation to 10 nanoseconds, again the crystallization is slower, and also for 100 nanoseconds. But we have not understand that why the simulation is again slower in the case of 10 nanosecond and 100 nanoseconds. So we have calculated the entanglements from using the Z1 code, as I mentioned in the methodological section. So we have found that the relaxations, the number of entanglements is improving. Because of that, when the crystallization is slower because of the high number of entanglements. So you can see the density in the crystallization also for the 10 nanosecond, the crystallization is 46%, and for the 100 nanosecond, it's only 40%. This is indicating that the number of entanglements has been improved with the more relaxation in the molten resin reservoir in the experiments. Because of that, when the durability is improving in the mechanical properties calculations. So coming to the conclusions, I would like to show that we have prepared a high density polyethylene or crystalline model with a justifiable microstructure characteristics. And these microstructure characteristics have showed that we have generated a lamellar orientation structure in alternative lamellar orientation with amorphous phase, which is quite interesting, and which is very suitable model to study the structure property relationship. And our simulation also showed that the mechanical property recycling the behavior is completely mimicked using the simulations. And also we have shown that a dynamic shear deformation followed by the relaxation is improving the mechanical properties because of the number of entanglements in the microstructure has been improved. Due to that, the crystallization is slower, and this could be an optimized condition for recycling. And we believe that the dynamic kind of deformation equipped twin screw extruders would increase the number of entanglements, and which would be an ideal choice to prepare the processing conditions or optimize the processing conditions for plastic technology or improving the mechanical recycling of the plastics. So from this perspective, I would like to acknowledge our funding agency, NIDO from Japan, and a high performance computing facility from Kyushu University, and also organizers of the ICMACS for giving me this opportunity to show my work. Also, Dr. Farhan Pasha for inviting me this talk, and everything. I'm very thankful for Sunil Kumar Mishra for arranging and making this arrangement for my talk. Also, my supervisors, Professor Narhan Shastri, Devesh Kumar, and Hemant Kumar Srivastava for collaborating me in IICT Hyderabad
and we worked on the molecular dynamics simulations, and I have learned several basics from them. So I'm really thankful from this program. And if there are some questions, I would be happy to answer. Thank you so much for your kind attention. Sir, very nice lecture on plastic recycling using computational chemistry. Much pleased to see you. Thank you so much, sir. Thank you so much. ICMACS 2024 का आज प्रथम दिवस इस प्रकार संपन्न होता है। कल हम लोग 10 बजे से फिर यहाँ उपस्थित होंगे। 9:30 बजे से नाश्ता है। आप लोग की उपस्थिति में 9:30 बजे चाहूँगा।